Hello, hello. Mic testing 1 2 3. Can you guys hear me? Can you guys see me? Let me know in the chat. Let me also open chat here on the side so I can see you guys. How are you doing? Can you guys hear me? Can you guys see me? Give me a GM in the chat. Today is an interesting live. We're going to copy over a pretty big company and try to build something like that in house. I think there's a desperate need to make classes interactive. It's much harder to, it's pretty hard to do live quizzing generally. I think that leads to better retention when it comes to live courses. So I'm going to, sorry, I read something very funny. So today we'll try to build that, but we'll wait for a few people to join. And then let's do Akiyat equal to 8. Thala for a reason. This is one, whatever, comment I'll never understand. I need to get to the bottom of it. Let me create a quick quiz for you guys. Let's do it interactively and see if you guys get what we want to build today. This is the website. That's, I think, pretty popular. I don't know how much these guys have raised, but I wouldn't be surprised if it's too much. The hell, have they blocked me? No, they haven't. Okay. Mentimeter Crunchbase. I am good. How are you guys? 42 million. That's a lot of money. As you can see, Series C, which basically means, yeah, this is pretty decent PMF, I feel. Building something like this, a quizzing application. So that's what we will try to build today. Let me create a quick quiz here and let's try to do that together. I can play songs if you guys want me to. And if the quiz does well, is able to handle, the traffic today, then we'll try to build the thing ourselves. Although whatever I thought the original architecture of this is going to be might change in the last 5 minutes because I thought of something which might not work if you're doing a pure Next application. But either way, let's try to build this. Let me show you what it does. Let me create a quick quiz here. The UI is pretty good. And they let you basically create these quizzes. And now that I've created this quiz, I can share it with you guys. Let's see. So yeah, just go there and try to join this quiz. The way you can do that is just go to menti.com and use this specific code 253800147. And when you blast the songs, okay, I'll blast the songs when we start. This is a very simple quiz. And let me wait for a few more minutes for people to join and then we will start the quiz. Once we go through the quiz, we'll try to build the same thing ourselves. All right. Let me play songs until then. Chalo. People are too funny, dude. All right. Seems like a few people have joined. I'll wait for some more time for people to join. This is so good that no wonder they've raised so much money. The UI is pretty solid. Yeah, I think it'll be really hard to build what they've built. But we'll see. Especially the UI is, I mean, it's pretty easy to do on the backend, but building a UI that's as clean as this is going to be hard. We'll see. We'll wait for a minute more. 10:05 is when we'll start the quiz. And it's a very simple quiz, by the way. You guys are going to laugh your asses off if you feel like मैं बहुत कोई difficult सवाल पूछने वाला हूँ. It's very basic. Never mind. Just wait for 2 minutes. You'll see. All right. Shall we start in 3? I'll just wait for 10:05 and then we'll start. Let's wait for 100 people or so. Interesting, they support, they let so many people join on a free plan. All right, good to go. Let's begin in 10 seconds. By 10:05 ho hi nahi raha. Yeah, I get it's a company, that's why. Yeah. All right, let's kick things off. This is the first question. Answer fast to get more points. What is... let's see if someone gets this wrong.
Yeah, this will be really hard to build. Like, point to point, it will be really hard to build. All right, cool. Let's proceed. Leaderboard. Yep, that will be pretty hard to build. I think the front end is what I'm worried about. The back end for this should be straightforward. All right, question 2. So this is like a typing questions where you have to type this out. Tell a few properties of JavaScript. This is probably, yeah, just type out whatever you can, but this is, yeah, unsure if you guys will be able to. I mean, maybe. It's like you have to write the right spellings as well. So, if you spell it out incorrectly, it'll be wrong. So 15 more seconds. The standard properties, right? Like, I mean, my hint is single threaded nature of JavaScript. Now the question is, what do you write? Do you write single threaded? Do you write single threaded nature of JavaScript? That's the question. How to join the quiz? I think you're pretty late now, but the instructions are here at the top, right? Go to menti.com and click here. There you go. So we see a few of them. Single threaded and asynchronous. And there's like one more non-blocking that no one said. And someone pasted a ChatGPT answer as well. Interesting. I love this. This is like a pretty solid thing to build. Like even in the long term, but okay, for the short term, at least for us, I have classes every weekend, so I can just, use it over there. Alrighty, let's look at the leaderboard. Aditya is still up front. That's crazy. All right. Beautiful. And like, if we add it to the cohort, we can just do bounties for the top 10 people or something like that. So I like this. It's clean. All right, last one. Which syntax is correct amongst these 3 options? Very difficult question, guys. Prerequisites for Next.js, you need to know a little bit of React. Ideally, I mean, don't worry too much about it. Most probably, we're not going to be using Next. I'll explain why. All right, beautiful. Cool. Let's see the leaderboard. Aditya is still ahead, so congrats, Aditya. I mean, oh wait. Oh yeah, no, never mind. Interesting. Kshitij won. Wherever Kshitij is, you're not getting anything, but take it, chalo. This was a pretty solid experience, I think. And this is what we're trying to replicate now. The goal is, by the end of today, we have something like this. Okay. A website where someone can come, more specifically like an admin can come and hit a few endpoints. We'll build it the most leanest way today and try to test it by the end of it. The endpoints that the admin needs to hit are: number 1, create a problem statement, and number 2, go to next problem. Number 3, show leaderboard. These are the 3 endpoints that we need to support for the backend, for the admin. And for the user, there need to be 3 more endpoints. The user basically needs to support a /submit to submit a problem. On the backend, this needs to do a bunch of checks, make sure a user can only submit once. And what else? Is that it? That's probably it. Another one to maybe fetch the current state. The current leaderboard, the current problem. Yeah, something like that. Hopefully that's straightforward and, something we can build by today. Now, the question I have for you guys is, does anyone know how they work? Actually, we can just try that out. Let's try to debug this application from first principles. Let's try to redo the quiz and let me join as a participant now to see how they're doing this specific thing. All right. Oh, well, that's not what we want. We want it to reset. How do I exit this? There we go. Let me restart the quiz and let's try to basically debug how they're doing what they're doing. I have a few ideas, but at the same time,
I'm unsure. Then do they not let you? Oh, there you go. View results, manage results, reset results. There we go. Okay, I'm going to restart this. And now I'm going to show you if I have to debunk an app like this, how would I do it? Present menti.com and put this code. So let me do that. The hell. Let me move out of full screen here. 25380147. Join. Let's see. Yep. All right. Let me change the problem here. Oh, where did it go? The hell? That happened too quickly. Okay, I know how they're doing what they're doing. They have a WebSocket server basically, which is something we might not do today. What was that? Albi. Real-time experience infrastructure that works at any scale. Interesting. It seems like they use an external provider for their real-time. That's so funny. The biggest moat for an application like this is real-time, and it seems like they haven't built it in-house. They've outsourced it to a company. Unsure if I want to do that. We could do that. Oh, whoopsie daisy, my machine just lagged out. Yeah, we could just use Albi, or we can do it ourselves. I think it makes sense to use them. Let's look at their pricing though. This only makes sense if, yeah, that's not too bad actually. So I'm going to leave this to chat. Do we want to use what Mentimeter uses, or do we want to build all of this in-house? Let's do a poll and then go from there. Let's see. Poll. How should we build this? WebSockets ourselves. Use Albi. Start a poll. If I'm being honest, if a company of this level is using Albi, whatever the service is, it makes sense as a business to just use them. The reason for this is, as you scale, you'll see a bunch of challenges which this company, Albi, whatever this company is sort of dealing with on a day-to-day basis. Whenever you get a chance, you should outsource, but the comments are, well, alrighty. If it is in-house it is. So let's try to build a WebSocket layer in-house. If I'm being honest, this is something we did in the last stream as well. Latency of the stream is too high. Can you guys see me? Can you guys hear me? Just give me a yes in the chat if you guys can hear and see me. And if that is the case, we will proceed. Oh. Okay, it seems like there's a lag. All right, good to go. Let me remove Next.js from the title here because there's a good chance we don't use Next.js today. Alrighty, good to go, guys. Okay, bhai. Would urge you guys to clone this repository if you want to follow along. Let me try to build this on my side while you guys try to do the same. There's no pressure either way. I will try to code simply, and the stack I'll be using is either Golang. If you're using WebSockets, Golang might make sense. If you want to move fast, Node.js would make sense. Probably yeah, Node.js. React for the front end, Node.js for the back end, WebSockets for the layer. Do we need a database? Let's do a database. How much time do we have to spend on this today is the question. If we have a few hours, then we can do it the right way. If we don't have a lot of time, then not. How much time should we spend on this? 2 hours, 4 hours, 6 hours. Based on the results, we will decide the stack. The more the time, the better the stack. Usually as you're building, the better the stack you have, the more time it takes initially to bootstrap. In the longer run, it has,
bigger impacts. But when you're building it initially, if you use the wrong stack, by which I mean you use JavaScript instead of TypeScript, it takes lesser time, and initially you can get off the ground very quickly. But as your application grows, you face a bunch of pain. So all right, 2 hours. 2 hours it is. Oh god. Okay. Average is 3 lol. Okay, we can do 3. So if you're using 3, then the other thing I'm struggling to decide right now is, should we use WebSockets at all, or should we use HTTP and do long polling? The reason for this is like probably want to use WebSockets. Okay, let's build WebSockets in-house only. Cool. Alrighty. So 3 to 4 hours is fine. I think we can do this. I would urge you guys to just code along if you want, even though I think I'll be going a little fast, because we don't have a lot of time if we have to build this in 3 hours. But I think we can build it and test it today if things go well. All right, yeah, WebSockets. Everyone knows WebSockets. Alrighty, let's initialize an empty Node.js project. Let's initialize. I will keep checkpointing the code base, by the way. Also, let me create a few bounties for the front end bit so you guys can start if people want to build it. Yeah, let's do that. Let's create a few bounties for the front end so you guys can just, the people who want to build the front end can do it. Let me just add them here. Bounties for front end. Let's do a simple view with title and answers. Let's do a leaderboard view. The inputs for this would be title, which is a string, and choices, which is an array of strings. That's it. Maybe just maybe an image, which is also a string, which basically represents if currently the question that you have has an associated image with it. All right. Leaderboard view will take winners as an input, which is an array of string, not string, maybe username, profile picture, which is an optional string. If you don't have an optional string, if you don't have profile picture in there, give it a random string. And lastly, points, which is like a number. Yeah, and this will be sorted. All right. Whoever wants to build this, let's do 25 for this and 25 for this to kick things off. And then based on if it's very good, we can increase it. If there are multiple good ones, we can distribute it to more people. Please build these 2 things. Let me also put a screenshot of what I want to build so that you guys can just, copy it. nt.com. Let me open it here. Maybe the screen as well. Yeah, we need the screen as well. Join the course view. This one's $10. Stack React components using Tailwind. Sounds right. Let me put the screenshots and then go from there. Mentimeter. Reset result. And then let's restart it. And let me take a few screenshots. Sorry guys, we will start very soon. We'll start coding very soon. Let me kick things off here. All right. Oh, people joined as well. What was the code? It was 253800147. Let's do a screen like this as well if someone can. Let me take all of these screenshots. All right. Oh, never mind. We probably don't need that screen. All right. Join and then. Oh, there we go. Enter your name screen. We need that as well. Kirat. Get ready to play screen.
All right. Enter to start the quiz. Timer screen, and then the real problem screen. All right, there are a bunch of screens it seems, but like a lot of these are usable, I think. We'll only support MCQ questions for now, so I don't think this one matters. Whoever is trying to target this, I do apologize. I'm going through this a bit quickly. We don't need these animations, although you can build them, great. But even if you have just this much, it's good enough. All right, guys, I'm going to end this quiz. Sorry about that. And I have a few screenshots that I'm going to add to the README so you guys can read them. And basically try to build as many of these as you can, whoever is targeting this. If you can, never mind, just build them as independent all right, status GA. The cleaner the solution, the better, and the more the bounty. I've written a few screens here. Frankly, there are many more. So you can find them at GitHub. You can find the link in the description. It's basically this website right here. Basically, try to go to this website. There is an images section here. Try to build as many of these components as you can using the Tailwind plus React stack. Make sure they are clean, as in inputs, TypeScript inputs are very well defined. For example, there'll probably be no input for this one. There'll probably be no input for this one either, but this one will probably, take a callback as an input, which will return you the user that the user pressed in. Basically assume the state will be passed in by me. And if there is something you need to pass to the parent, that's also something you'll pass me back through like a callback function. Cool. All right. Cool. I think we can kick things off. Let's start with the backend, as some of you are building some of these components. Please label them correctly. Please create a pull request. The more the description, the easier for me to read them, the better. So, I can quickly finalize one and just start to integrate it. All right, let's get right into it. Let's start with the backend. Let me go to TS. Let me create a TS config here. Let me replace the outer dir with. So these are like simple bootstrapping things you would always do. Source. What is it called? Base dir. Source dir to hota hai. Root dir. All right. That's. Let me create a folder called backend and copy over package.json, tsconfig.json. Basically copy over everything other than, well, I guess these two are good enough. Backend. So this is what the folder structure looks like now. Backend has all of my code. Here, I'm going to add a few libraries. Let's add Express. We don't need Express. Let's create a source folder. Let's add a index.ts file inside. Now let's add a few libraries that let us do WebSocket logic. We actually used a WebSocket library in the last one, which frankly, if I'm being honest, wasn't the best. Let me explore a few more libraries today. This one has 635k downloads. This one has 49, whatever is this, million downloads. Probably the one you want to use. Yep. Unless we want to use Socket.io and make our lives very easy. Well, I said beginner friendly here, so probably makes sense to use Socket.io. There are some downsides to Socket.io, but who cares? I think I'm really struggling to decide which one to use. What library to use? Start a poll.
What library to use? WS socket.io. The difference is socket.io will make your life slightly easier, but it's harder to scale and isn't really cross platform. Will make our life like a living hell if we want to create a native app or a mobile app. Not a mobile app, yeah, a mobile app. But if you use WebSockets, our life will be slightly easier. In the sense, it's very cross-platform, scales very well, but seems like it's not going to be the winner today. All right, Socket.io, 2 hours, 100% doable. Like this is like very easy to do because it gives you some room logic that makes your life a little bit easier. All right, guys, this is not the right way to build this. मैं ये पहले बता देता हूँ. Okay, I know it's easy, but everything that's easy isn't right always. Let's go with Socket.io because unfortunately it won by a whisker and my machine is lagging again. This one's oh, there you go. Let me stop a few things on my local machine here. What would be the right way? Go for WebSocket, right? Yeah. Yes, go for WebSocket. There's like a really subtle difference as to why this is better than, this. Actually, Socket.io is better in a few other cases. Okay, it out of the box fallbacks to HTTP in case WebSocket doesn't work well. And it also, as you can see, has implementations in other languages. So as an it is, when I said okay, WebSocket is cross-platform, this isn't. This is also pretty cross-platform, as you can see. They have some implementations in other languages. Yeah, if I'm being honest, if I said beginner-friendly and if the votes are at 46%, or like 54%, I unfortunately have to follow what the crowd is saying here. So Socket.io it is. Yeah, it should be fine. ठीक है जी. I've added Socket.io. This lets you bootstrap very quickly. Like it's literally 5 lines of code to start an HTTP server. So let's do that. Let's just replace the imports with and let's make all right, very basic bootstrapping logic to so what's the issue here? Expression is not callable. Port default. Machine is lagging again. Oh, there you go. Okay. क्या मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ? Okay, there you go. ठीक है जी. client.onEvent my machine is the fuck, dude. I have a pretty decent machine. How is this lagging so bad? I'm not even sure if you guys can see me now. Yeah, there you go. It's probably a lag. Let's see what's happening here. Something is killing my machine really bad. Yeah.
there is a lag. I get it. Edge, all right. That's fixable. Google Chrome. Brave, all right, it's fixable as well. Can't do much about Chrome. Adobe Creative Cloud, let's see. Right, ठीक है, अभी के लिए तो चल रहा है. We'll see. Console or log data client.event. I think that's fine. Let's see. We're going to receive a few messages. What was our original thing? What did I say we have to build? For the admin, we have to build 3 things: create a problem, go to next problem, show the leaderboard. That basically means a user needs to identify themselves as an admin. So since we only have 1.5 hours left now, I'm going to not use TypeScript the way I would have used if this was a real project. Const pay type equal to data.type. Can you guys hear पीछे जो गाने चल रहे हैं? So the place I live, it has like too many, what do you call it, marriage palaces. So every day it's this only. The good thing is we're leaving India very soon again, provided I get a visa. Should just be a singleton, does not matter. And user, there we go. Room ID. You'll notice a lot of things that we're doing today are very similar to what we did in the last live, because we were building a real-time app there as well. We're building a real-time app here as well. That was the reason I wanted to use Next today, because Next.js, we can hear the beats. Next.js is a little, well, it's something new to do, right? That's all. TKG room ID, user ID will probably be randomly generated, and socket. User manager. Do we need a room manager? It's fine. I think it's fine. Socket. All right. This dot users dot push socket room ID, and this dot create handlers. For this specific socket, for this user, I guess. So, I mean, socket and room ID is fine. Songs today, एक बार पोल कर लेते हैं. पिछली बार गाली पड़ी थी. Quick poll, guys. Do we need songs? Yes or no? The thing with songs is it tends to, it makes it slightly harder to focus, especially later when people join. It's not as fun as it is right now, but happy to create a poll and just follow whatever the results are. I'm okay either way. This dot users dot push socket ID. Oh no, we already did that. Socket dot on. Submission data if data dot okay, let's see. We need a quiz manager. And we need a quiz class as well, I think.
Oh yes only. चलो ठीक है भाई फिर. Alright guys. Playing songs but very low. Okay. Show your favorite songs while you code. I think that will lead to a copyright strike for sure if I put it somewhere here. Harsh Patel always gets me. Alright. Constructor. Quiz manager. Quizzes. Quiz. No class this weekend. I am unsure yet. We'll see. I mean, we will have a class, but like on what is the question? IO manager. IO manager? Yeah. It's IO equal to new server, const IO manager equal to new IO manager, and pass in IO as an input. Let's do all this in there. No. This definitely needs to be private IO. This needs to be a singleton. I'll explain why later. Private static instance IO manager. This dot constructor. What does this return? Server. Oh wow. I am your cohort 1 student. I have successfully gotten 19 PRs and I am currently on the number 21 in that org. Can you give me some advice for GSOC 2024? Now is your time कि भाई थोड़ा पूछने लग जाओ कि हो गया मेरा, क्योंकि at this point they know you and most probably थोड़ा उनको hint दे दो कि हाँ अब तो हो जाएगा ना. मतलब 19 is pretty good man. I think 19 pull requests is a good number to be at. बस अब थोड़ा मतलब that's the only thing you can do, और बाकी जो काम कर रहे हो करते रहो, उसमें कुछ नया नहीं है. But yeah, that's beautiful man. 19 is great. I think 19 is if I was you, I would assume तुम्हारा हो जाएगा. IO manager needs to allow. Why am I creating this again? So everyone can access IO. That's the only thing. Yeah. Then we can just do this, right? That's good enough, I guess. Get IO. Return this dot. Well, so let's initialize everything here, right? Yeah. Yeah.
बताता हूँ ये क्या है. Even I am confused at this point, but give me some time. This.io equal to these are the things that you do initially so that your life is slightly easier later on. So get io. Now this needs to be this.instance.io. Const io manager const io equal to io manager dot get instance dot io. All right, ये सारा लॉजिक वहाँ डाल दो. Or should we? Maybe not. So what I've done is I've created a new class called IO manager. Yeah, the singleton pattern exactly. The reason for this is okay, this IO is going to be needed in 10 different places, and it's very hard to keep passing it down to classes as I create them. So I've created a global class where I've defined this instance, and that's what I'm going to keep returning to everyone. This one instance, this one manager. So make it. That's fine. Yeah, that's fine. No exit type IO manager. The hell? Oh, my bad. Alright, so the reason I've done this is so that there's a central place where I can get this IO object from. And in every file I'll just use this. Alright, back to the quiz manager. यार ये मुझे distract कर रहा है थोड़ा, एक second यार. This dot quiz is equal to this. Now here basically I can do get the IO object and do things with them. Now that you have a quiz initially, I wanted to have a start function which will send to everyone. So basically this.io IO manager.get IO, and then from here I can do a bunch of things, right? IO dot room or whatever broad to this dot quiz manager is going to get a room ID as a string and going to do IO dot to room ID to this room send a certain message which is going to be type whatever emit start underscore room, and well, it doesn't even need that. It basically needs to get the next problem and send that to the user. Start and then public next room ID. So it needs to do a quiz ID or quiz is empty room ID. Const quiz equal to dot quizzes dot find quiz dot start. All right, does not look too bad here. We'll take a break at 11. Start needs to do this guy, which will set has started to true and send over the first problem statement, which basically means this dot problems. This needs to be an array of problems. Title, string, description, string, and image if there is one string, and then answer can be stored at least here, which will be either of 0, 1, 2, 3. Oh, options, I guess. An array of ID, number, and string, which is the title of that option. Alrighty. Add problem with a title,
basically going to be this only. It is true. This dot problems of 0 को emit करना है, so this IO is equal to IO manager dot get inst IO, and then going to do an IO dot emit. Ideally, I should just expose these functions from here so we can swap out, you know, WebSocket, like socket IO with something else. Not doing it right now, but that's how I would do it if I had more time. Emit underscore, sorry, change underscore problem. And what are we going to change it to? And this problem right here. All right. Yeah, that looks good. And then next is going to basically just get the private active problem, which is number. Now I have this, I'm going to send that over if it exists, and if not, that means the stream has ended or whatever, the quiz has ended. All right, good to go. Lag again. Yep, it's a bad lag. Options will be array made by the object. Difference between .tsx and .ts. Difference. Do we have to put all the socket code in a single file, as everything will inside will be io.onConnection? Do we have to put all the socket code in a single file? Not really. I mean, it won't be. It will just have the handlers there, and then it'll, you know, route requests various places. Wow, the lag is insane. Like, I can feel it on my machine, so you guys don't even have to tell me. I know there is a lag. I'll wait. I think it's because I have this external monitor connected. I could be wrong. This is Visual Studio Code. I'm not using Vim. What is this? Let me try to terminate as many things as I can locally. All right, let me push the code in as well. When will video on NewVim come out? Goal is before New Year. So basically in the next, well, we only have 3-4 days. Hopefully by then. But yeah, soon enough. You aren't even using Vim motions in Vim. How are you using Vim so fast? This isn't Vim. This is Visual Studio Code right now. All right. Pushed in the code, 10-minute break. We will restart at 11. Let me give a high level of what we've done until now. I have a top level index.js file, which is this file right here. If you look at it, sorry, index.ts, it gets the IO object, which is like the socket IO global object, and starts to listen on it. I have an io.onConnection, haven't done anything yet. We'll see where this resides. This will either be here or it'll, you know, go somewhere here. Probably will remain here only. Here is where I'll start to catch all the events. I need to catch 3 admin events and 2 client events. All of these will probably go to the quiz manager. And maybe not from here, maybe from the user manager, they go to the quiz manager probably. And the quiz manager will send them to quiz, which will, you know, broadcast them back to the user. That's the high level of what will happen, you know, in this specific code. Yeah. All right.
10:50. Any questions until now? The code has been pushed in. Happy to just chill, happy to just talk, and then we'll go from there. Bro, the most absurd songs are playing, and this is like, oh, bachelors nahi reh sakte society mein, and then someone's playing Bidi Chalele at 11 p.m. By Friday anthem on Wednesday. Comments on the prime gen, he's pretty good. Class with static methods only vs singleton for sorry, could you repeat the question, Ashutosh? भैया मैं रिएक्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है. नाउ रिडक्स टूल किट सीखना कैसा रहेगा? पढ़ लो भाई. वाई व्हेन डू यू वेक अप? 4 PM आजकल. नो 1 to 4 मतलब लगा लो तुम. Why not use emitter? What is emitter? Video on NeoVim will come out before end of year, or 1st November. Probably a good start to the new year. Increase the volume. Can you guys not hear me, or am I speaking too slowly? Can you guys hear me well? Hello, mic testing 1 2 3. Why don't you use functional programming? I mean, whatever gets the job done, whatever has the most projects out there, whatever is the easiest to bootstrap for me, right? If you're interested in it, you should do it. I'm not saying you shouldn't do it. It's just like, I don't have the time for it yet to learn something new. That's why. Why no super chat option? क्या करोगे देखे? Let me turn it on. Wait 1 second. Monetization off, I think that's why. Hi Kirat, I'm okay. Mind. What about WebRTC? Well. Not for this project, but let's do WebRTC soon. Like simple peer-to-peer WebRTC for a different project, which is very close to this. Like a peer-to-peer challenging app is what I'm thinking. Okay, two people come, they can see each other, and they've been given the same problem statement at the same time. Okay, solve this DSA problem or whatever, and then whoever solves it first, they can both see each other, talk to each other, and solve them independently. Here you'll need a little bit of WebRTC, so maybe next time. Alrighty. At what point in our coding journey should we expect to code like you, like in a flow state? This comes with practice. Okay, if you do the same thing many times, for example, real-time apps like these I've built many times. That's the reason I don't have to Google much right now. But if let's say I was building the same thing in Haskell, then I would have had to Google a lot. तो ये रहता है कि if you think like you want to get into coding, once you get, by the way, एक चीज़ में deep जाना is important. Keep saying this many times, become a specialist. क्योंकि वो ये, if someone gives me this app like this, कि build something like this, it'll take me 2 hours to build it for them, and that's value. Versus कि मेरे को थोड़ा सब आता है, but someone gives me this project, I know 10 languages. In the end, I have to write it in just one. I don't know it well, so it'll take me like an hour. So, all right. What will you do? What do you do when you face complex backend problems? What is your approach? I mean, just spend more time on the whiteboard and then less time coding is the high-level idea when you're doing something like this. Are you making pro on AI? What do you mean? Oh, projects on AI. I tried it. So a lot of, these live streams depend on what you guys want. I don't want to stream alone here. There are a few people on the stream, makes me happy that I can code along with you. The problem with an AI stream is I don't think a lot of people want to watch it. We tried one. It has like half the number of views from the other videos. So that's why I didn't do it. Same as the idea with Web3, I guess. But if we get views, we will do it. All right. Course on DSA, really needed. Oh God. I'm really disconnected from DSA. I wouldn't call myself bad, even though it's been a while. Maybe I am bad now. It's been a while since I've coded an algorithmic problem. Bro, skincare routine drop kar de. वही है मेरा स्किन केयर रूटीन. Have you seen that meme? Mohammed Salman Ansari? Maybe not. Don't watch it. Have you worked on Hyperledger? No. It's a pretty archaic technology from what I know. I don't think anyone's using Hyperledger to create blockchains today. That's what it is, right? I could be wrong. Hyperledger. Yeah. People use Cosmos or Polkadot today. I don't think anyone uses, Hyperledger to create a blockchain today. Alright guys, time to grab some water. I'll leave you guys with some nice Punjabi music. This one's a good song. सुनो आप लोग, मैं आता हूँ in 5 minutes and then we'll go from there, alright? The goal is to finish this by 11, at least the backend bit. I think it's possible. Yeah, let's try that.
तारे पत्थर ने कोई मुल नहीं सी था रुड़दे फिरदे सी लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने बातें लिखिया नाले वेखो नाले चुम्मा मैं मेरी सुरत भुलाती तेरे नां दे अखर ने मेरी सुरत भुलाती तेरे नां दे अखर ने इत्थे कोई ना मिलदा आपे रब मिलाउंदा ए मिलना विछड़ना ए सब किस्मत दे चक्कर ने इत्थे कोई ना A live with LangChain and pure JS would be great watch. Done sir. अगर नहीं आए व्यूज़ तो आप ही को मारूंगा बट हाँ आई एम हैप्पी टू डू इट बिकॉज LangChain JS ही है जो मुझे भी समझ आती है अच्छे से. Do you know 1 to 100 will start 1st February? No, sorry, December, January, February. 1st March, irrespective of where 0 to 1 is, 1 to 100 will start on that date. चलो भाई, let's ask some intrusive questions to chat. मेरा AMA आ रहा है in 2 days, my 300k AMA. You ask some really spicy questions in that. So मेरी बारी अब. Are you single? इसका तो वैसे मुझे आंसर पता ही है पर चलो. $300k special stream ASAP. You can think of this as that. Well, not surprised at all. 80% of the people in this chat are single. I spent a lot of time trying to do WebRTC using PeerJS. Don't use PeerJS. Use raw WebSockets. Sorry, use raw WebRTC or use MediaSoup, Pion, one of these libraries. Either build it the most scrappy way or build it the most production ready way. Don't build it in the middle. Is all I'll say. Alright, have you done MS in the US? No dude, only done bachelor's in computer science once. That's all. Uske baad ho gaya mera college. Even though I had a few offers from masters, COVID happened and then I just didn't go. आप कितना सोते हो पूरे दिन में? बहुत सोता हूँ भाई मैं. आई स्लीप एटलीस्ट 8 hours. मोर ओनली 8-9 hours मेरा हो जाता है. 20% मैरिड है. ओह इंटरेस्टिंग. Class with static methods is versus a singleton class or manager type of classes. Class with static methods only. You can do that. You can. No, you cannot do that. The reason for it needs to be singleton is so that you only initialize the server once, else you'll reinitialize these and then you're pretty much screwed anytime you're recreating this object. That's the reason for it. ठीक है भैया, save water and bring Red Bull. पानी है भैया तो. Right guys, it's 11. Let's get back into coding. Where are we? Admin manager, इसको रहने दो अभी. User manager has add user, which will push a user here, create handlers, and here is where we'll add a bunch of these handlers. Talk on submission. Quiz manager dot submit. Now here comes the tricky bit. How do you do authentication in an app like this? When you go to Mentimeter, it does not ask you or give you, like, make you log in using a username or password. Probably put something in your local storage. Which basically means anytime someone joins, we need to give that user a specific ID. My machine is
Okay, let me just remove my iPad from my machine. Maybe that helps. All right. Get back into it. Quiz manager.submit. The socket. Can we use the socket ID? We cannot. We cannot. Anytime a user joins, we need to give them a unique ID. My god, my machine, dude. Is this TypeScript? Yes. Sorry guys, I'm trying my best to code here, but my machine isn't really responding. Try to quit as many apps as I can. All right, let's see. Socket.on, join. Let's make the user give us a ID. No, we will give the user back an ID. So quiz manager dot add user with const user ID equal to quiz manager dot add user data dot name. This dot quizzes io dot this get quiz from ID question mark dot add user name. Users will be an array of user, which interface a user is going to have a name and an ID. This ID is important. We need to randomly generate it. For that, I'm going to either use a library or do a random function here. Return random string in JS function. Your live stream is better. This dot add user name string. This dot users dot push const ID equal to this dot get random string of maybe 10. I guess 7 is good enough. This dot users dot push ID and name. All right, good to go, guys. This needs to return the ID. That's the important bit here because we need to send that back to the client. Good. And then यहाँ पे आप const user ID equal to do we need the quiz manager in multiple places? Probably not.
user looks right. Socket dot emit user id. All right. Socket dot on. Submit. Problem id equal to data dot submission equal to data dot submission. If submission probably want to use a better library here. कौन मुझे कोड से बताएगा कि यहाँ पे हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे? UI this dot quiz manager dot submit add user get quiz submit. Check the pull request. I will, as soon as I finish this, I will. Room ID string, problem ID string, submission 0 or 1 or 2 or 3. This dot sub. Right, so we have problems. Yeah, we have a lot of problems. Should submissions be an in-memory object? Probably not, but ठीक है. We are going to शुरू हो गई. नहीं wait. So I'm trying to understand, should we, okay, let me explain something here. Oh wait, am I stuck? Probably not. There is this thing called, it's not called anything. So basically, do you want to store data in memory or in a database is the question, I guess. The problem with storing it in memory is if our server ever crashes, we're screwed. All our data is lost. But since we're short on time here, we have 50 minutes left. I am basically sort of forced to do this over here. Okay, I'm going to store all the submissions in memory and, finally find the leaderboard from here. Probably not something you want to do in production is what I'm saying. Basically, all of these things that you see in memory here are probably not supposed to be in memory. It gives you like lesser latency, but isn't something you should do in prod. Let's see. Interface submission, problem ID, string, submission, string, user ID, string, and then is correct, Boolean, options selected, string. हो गई रेट शुरू. Well, hello. आज क्या लेके आए हो? Anything new and interesting, guys? What are we guys raiding on? इजी को बुलाओ से बोलो कोड करे आजा. हम
Nothing interesting today. All right, I'm just gonna get back to coding. All right, submit. If problem equal to this dot problems dot find. My neighbors are party hard people. I know, right? X dot problem ID equal to submission. If problem exists, then const existing submission equal to this problem dot submissions dot find x dot user ID equal to ID. Else this dot problem dot. Didn't understand the IO manager part. Yeah. So basically, as you can see, there's like, I start a server here, right? And you want to do this only once throughout the lifetime of your application. For that reason, you basically use something called singletons. This is one way of doing it. There are other ways of doing the same thing, but effectively this IO needs to be created once in a file and needs to be accessed in all the other files that you see. And one way of doing that is, passing it into each one of these constructors and having them here as a private variable. Or the better way to do it is just, have it globally somewhere, which is what I did. So that's a high level. We are not writing front-end code because someone else is already doing it. I think there are already a few submissions. Let's see. 3 pull requests. Only problem interface changed. Oh. Landing, user sign up, added leaderboard. Let's see. Pretty good. I like it. Pretty good. I like it. Oh, that's it. Okay, that's pretty good. Machine is stuck again. Need to do something about this. My machine is getting, yeah. All right, we'll look at that later on. Let me close all of this as well. Add problem. Bro, my VS Code is lagging. Too bad here. Hard to concentrate. Next dot. X dot ID. Yep. That's fine. Submission. Problem equal to X dot ID equal to problem ID. If it does exist, check if the user has a submission. If not, problem dot submissions dot push problem ID is going to be problem ID. Submission is going to be the submission. User ID is going to be the user ID. Is correct is going to be problem dot answer equal to submission, and option selected is going to be the submission.
Uh, push something that looks good. Probably want to add points here as well. Every problem needs to have a start time, and then every problem needs to be active for maybe 20 seconds, and then you need to get anywhere between 1000 to 500 points for every submission, which basically means that anytime a problem is started, it needs to get a start time here. It needs to be a number. Start. There we go. Start this 0, and then this dot problems of 0 dot start time equal to new date. And then same thing here. Whenever you change a problem, change problem needs to do what? Needs to do a problem dot start time equal to this. Alrighty. Yep, looks good. ठीक है जी, submit is done. Lastly, send. Maybe get leaderboard. This needs to get the current points. Oh, I need to push points here as well. So every problem that someone submits, they need to be given some points. Problem user needs to have points, which is a number. Don't need this cost. Which language are you using for AI? Combination of Python and JavaScript, mostly Python. Return this. E dot points is less than P dot points question mark 1. That's -1. This could totally be wrong, but that's fine. User dot points plus equal to new date dot get time minus problem dot start time 1000. So it'll basically be 1000 minus the time that has passed since the problem was posted. Minus 500 into 500. It'll be so hard. इतनी मैथ आती होती है जिंदगी में तो 1000 minus 500, or I guess 1000 minus 500 into let me keep this needs to go from, in a span of 10 seconds this will go from 0 to 100.
divided by 20. All right, 20 seconds. Assuming the const problem underscore time underscore second is 20, then it will be this. Is this right? 500 into, initially it will be 0, 500 into something divided by 20. That looks right. Cool. The only thing is, the leaderboard needs to kick in automatically after 20 seconds, which means whenever a problem is called, let's call a function, create a function called setActiveProblem, which takes a problem as an input and does a few things with it. Does a problem dot start time equal to this, and starts a clock, which needs to problem dot submissions equal to an empty array, and needs to start a clock that automatically stops the quiz after 20 seconds. So now this is something I'm not super sure of if you wanted to, but okay. This dot what is it called? Send leaderboard. Let's create a function called send leaderboard. All right. Yeah, this is going to kick us in the butt eventually. To do clear this if function moves ahead. Set leaderboard is going to do a const leaderboard. This dot leader get leaderboard dot splice 0, 20. Let's just get the top 20 submissions, and then IO manager dot get instant dot to this dot room ID dot emit leaderboard. Alrighty. Looks pretty decent. And then next we'll just increase problem statement and then get this problem and do what? If problem exists, then it'll call set active problem. Let's start time. I think I've done that here, no need to do this either. Alright, set active problem with the right problem. Alright. Alright, that looks pretty good. Maybe don't do anything here. Send leaderboard is done. Submit is done. Point calculation is done. Get leaderboard looks right. I think the user endpoints are done. Let me just call them from this quiz manager. This .quiz.submit needs to take a user ID as input, which means submit also needs to take user ID as input. That's right. Where is this guy called? User ID, room ID, problem ID, submission. Do we need the room ID?
if every user is getting a unique user ID. Probably not. Chalo theek hai. Submit fetch. Yeah. Do we need fetch? Do we need to support fetch? No. We have the join, which can just return the user ID and the current problem. So here is where I need to expose another function that gives the user the current state, so they don't have to ask for it again, because they're asking for it. They're dying for it. Get off my back. Get current state returns one of two things here. Type leaderboard. I think any is fine for now. Or type question, and then question, which is just going to be, yeah, let's let it be. This returns this const current state equal to, first get the room. Is equal to this. If not, quiz return room ID needs to take a room ID. There we go. Else return one of two things. Question or leaderboard, or hasn't started, right? Not started, ended, I guess, 4 states. And when you initialize, it's going to be we should use an enum here. I know. I don't think we have the time for it, so I'm proceeding. If this dot current state equal to not started, return type not started. If this dot current state equal to ended, return type ended leaderboard. This dot get leaderboard. I think this function itself should splice. Type equal to leaderboard. And lastly, if this dot current state equal to question, then it needs to return basically the current problem statement. This dot problems dot find this dot active problem. Right, good to go. Cool. Let's define a type here. Else return quiz dot current state. Let's go back to user manager. State this dot quiz manager dot get current state for this room. All right. Join is done. Submit is done. Do we need anything else? No. Everything else will be done by this guy right here. Specifically, change a problem
or send the leaderboard or send quiz underscore end. Just fine. We can just leave things at the leaderboard here. Yeah, we're sorted. User side is done, guys, which basically means, if you remember from a few minutes ago, I said the user side needs to support three things. Whenever a user comes, end user comes, they need to be able to submit a problem. They need to be able to get the current state. I think that's sorted. Let's quickly create the admin side. We can actually hard code questions here to kick things off. Or let's create the admin side really quickly. Shouldn't take a long time considering, user manager was this quick. Yeah, it's just going to use a few functions here. That's fine. Copy, go to admin manager, paste, replace this with admin manager. Users, or call them admins, either works. Quiz manager. This is going to be interesting. Never mind. Let's get rid of the admin manager. Let's make the user manager do everything. Join underscore add. Should these be HTTP calls that I can make? Probably. That's fine. Join admin. Admin data dot password is not equal to return else socket dot emit user ID, or maybe name this init, name this admin init. You can probably get back the state, user ID, but more specifically, only for this user we need to create a few more handlers, which is socket.on create problem. Assuming this is right, I can just do const room ID equal to data dot room ID const quiz manager dot machine is dead. Yep, completely dead this time. I want you to build the same backend with fast API. Sure, why not? Let's wait for a few minutes for the stream to catch back up. Right. This.get start public add give us the title, description, image, and answers, I guess. Options, sorry.
Sorry guys. Add problem needs to be on a room ID. Quiz. Let's do a quiz dot add problem. Do we have this? We do have this. Beautiful. Only thing is we need to initialize a few more things, huh? Dot problem, and then start time. Doesn't matter. Answer. That needs to be an input. Submissions, empty array. What are we missing? ID. Next needs to do nothing here. Quiz get quiz. If not quiz return quiz dot next. Room ID. Admin init. Create problem. Dot add problem. Data room ID. Data dot problem. Next. Alrighty. So go to next problem, show leaderboard, we don't need to support yet, and add a problem. Add a problem is done. Cool, I think we're sorted. 11:39. Let's take a pause. I think the backend is done, Vase. Let's start this up and see if it's working as expected or not. But I think we're pretty close, if not there. Of course, it's the first time I'm trying it. It's going to give me a bunch of errors as expected, but it shouldn't be too difficult to fix. Quiz.next room ID. Quiz manager. Next. We could do this dot problems of. Oh, yeah, that makes sense. All right, let's add some logging here. Add problem console.log just problems start console.log start problems. Never mind, it's good enough. Node index.js. Right, we've written the backend. I am going to now integrate the front end to it, deploy it, and then let's test it out. I think I'll start with an ugly front end and then we can eventually add the components that other people have written. So let me quickly start a React application locally. Let's keep it simple. Front end followed by React followed by TypeScript, cd front end npm I, npm run dev.
let's see. One thing I have to do probably is to initialize a quiz. Yeah, something I haven't done yet, have I? I thought the trending AI project API calls to API, but successful mini SaaS apps train their own models for scalability and efficiency. Can you make a video around training AI models? Sure. Not that I've done that too much, but I can try. Quiz equal to new quiz, which will take a room ID as an input. This dot quizzes dot push quiz. All right. Right, good to go. Time for some front end, guys. Nothing too difficult here. Let's keep it simple and straightforward. Let's create a few routes that let the admins create a quiz and then add problems to a quiz and then switch the problems in a quiz and then the user to just see the current state. All right. Source app.tsx, empty project. Let's remove everything here. Let's add routing, which God knows what's the best way to do that today. Routing in React. I have a feeling this isn't the right way, but we'll see. Oh, you've done all the routing already. Let's see. Okay, someone says they've already done it. Oh wow, 15 pull requests. Who was this? I've done all the route. Kahan gaya? Sargam. Okay, there we go. Leaderboard looks good. Quiz. Okay, let's try this out. Live quiz app. Quiz. Join. Leaderboard. Yeah. So these look like the compo. I mean, yeah. I'll get these in. Let me just let me fix, like, add the routing myself and then happy to. User is going to be hi from user.
Okay, there we go. ठीक है जी. Admin needs to do a few things. Number one, create a socket.io connection. So react socket.io. Come on. Sahil coupon code, I think early bird is still active. You can use that. npm I socket.io client. Vivek Bindra, what about him? Interesting. I don't know how it keeps on happening again and again. Like MLM, like it's so obvious. I mean, it's not so obvious. I had like good friends at Goldman who got stuck into like one of these MLM thingies. So I can't say it's easy for, I mean, I had IIT friends from Goldman basically who sort of got stuck in there. So can't say ke, it's very obvious ke it's a scam. But at this, I mean, I haven't been to any of these conferences, but my friends have. And the ones that did were, really sort of into ke haan, pata nahi wahan kya hi ho raha hai. So yeah, dude, everything is a business in the end. And this is, I guess this business runs on how much you can, how much FOMO you can generate or make people feel how much money they can make. Yeah, it's weird though. Lookup as default. Does marriage affect coding? How would marriage affect coding? That's a weird question. The PC documentation here. Import IO from. Okay. Socket.on connect and socket.on is not right. The hell. Socket.emit user manager emit admin init. Oh, create quiz, create problems. Two things we need to support right now. Well, the first thing this guy needs to do is send a join with the right password. All right, and then coding fixes depression. I would agree, sir. Oh, interesting. This needs to only happen after you've created a room. So basically, how would room creation happen? Admin net. Create quiz, room ID. Yep. That's not great.
Can you guys still see me? Machine crashed. Let's see. All right, my bad, guys. I'm back. Cool. Time to take a breather here. By use keycaster in your Mac. Cast your key presses in small corners of your screen. Yeah, it is useful. At the same time, sometimes I'm putting in passwords when I'm pushing in my code, so can be a little problematic in that case. But I get what you're saying. Let me do a few things here. All right, that's one. Then let me change my display capture to all right, that's not great. Good enough. All right, sorry about that, guys. I am taking a breather so that I may also push in the code. But my machine is not super supportive today. At the same time, I think now that I've disconnected my external monitor, I think we should be fine. Let me add the current code and push it in. Initialized the front end. Cool. Time for a 5-minute break before we proceed. How's everyone doing? Hope you are doing fine. Any questions? Buy playlist for TypeScript. Unsure. There's not much to learn in TypeScript. Don't have a good answer, sir. Early bird not working. Don't put a break in the middle. It's like early bird together. Shifting towards MERN after a year of working in Flutter. Still learning more Flutter side by side. Should I go towards jack of all trades or expertise in Flutter? I think expertise in Flutter is probably the better way to do it, I think. Could I be wrong? Yes. But that's what I would do. Which MacBook are you using specs? Said this a few times. I think it's a 16-inch M1 GSOC 1 tip. Contribute deeply in one org. Why WebRTC not in cohort 2? It is part of 1-200 though. I resigned from Amazon for a few reasons. Need at home, best way to get remote job ASAP. The best way to get a remote job, any job generally, is to, get very good at some skill. That with finding the right opportunity, being at the right place at the right time, combination of all of these leads to a remote job. There's no clear cut कि ASAP कैसे लग जाएगी. It's, a lot of it is just being really good at what you do and then being connected to the right opportunity. Views on automation testing and SDAT profile. Unsure what that means. By frontend के थक गए, backend शुरू. Backend तो हो गया. We finished the backend for what we were doing today. I made good first contribution. Added a link to your repo as well. Not familiar with GitHub. That's fine. We'll love to see it. Maybe we'll do that. We'll look at all the submissions very soon. Is it really good idea to learn MERN stack in 2024? Because there are so many people. Is that the question? Yeah, it depends. The stack is something you should decide for yourself. It's a combination of, company में क्या हो रहा है तो मैं किस company में जाना है, and then whatever that company is sort of using, learning that. But the only advice is कि just choose one. All right, 3-minute break, guys. कौन सा गाना सुनोगे बताओ? Let's see.
be back soon, guys. Back in 3 minutes. All right, guys. जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? एनी फाउंडेशन लैंग्वेज का वो ये कि भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ उस पर. That's the best way to do it. Review the front-end PRs. We'll get to them very soon, guys. Let me add all the logic in the front end, and then जब वो उसको prettify करने की बारी आएगी, I'll look at the PRs. I promise. All right. ठीक है. The hell? क्या हो गया? Oh. All right, let's see. We are able to create a socket IO connection. Socket on join admin. This doesn't need to happen to begin with. This doesn't need to happen either. Add quiz data to room ID. Okay, that sounds good. Only thing is, if create quiz and then create problem. Right. Now, anytime an admin comes, what do they need to do? They need to give a user ID. Input type equal to text.
Okay. Alright. Right. Options, ID and title. Set options, options dot map x dot id.
चार ऑप्शन आनी चाहिए ना इसके नीचे, ये देखते हैं बाद में. आई थिंक इट्स फाइन. एडमिन, क्रिएट प्रॉब्लम, सॉकेट. यूज़र के एडमिन पे quiz ID, room ID. If not quiz ID, show the user this, else show the user this. Set quiz ID. Problem 0. Option. What is 2 plus 2? Question is this उठी खांदा मोटी यार ने पक्के सी रखी चुचे खालियां नी. Create, add problem, socket.emit, create problem, room ID, problem ID, problem. Title, description, options, and answer.
good enough. I don't know. And then right. All right. Huh.
Join admin called. Control is reaching here. Perfect. Thrice. Sign as. तेरी ओढ़त देर लगारी क्यों मैं धूप में रुका सवारी घंटे पर तेरी बाट तक छोरे न लगी बीमारी हर एक रंग की सुंदरी ना ना कोई कमी ना लारी तू पर सूट रेशमी गिर चले तो भारी भीड़ लगारी तू एक बार चल गई पूरी सो कर दूं रंग मेरा देख देख दूरी नो डर तू फिर ना बोलेगी तेरा संग माड़ा तेरा Problem. गजल एक मैं अधूरी छोड़ तू क्या मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ तू क्या कुछ इश्क जता दिया है शाही से थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ तू क्या Right. Create problem title. Oh. Title, description, options, answer, ID, start time, submissions. Right, next problem. Right, that's good. Question number 1. Alright guys, we're getting pretty close here. Leaderboard, perfect.
problem. Set active problem. Set active problem. Question 2. Next problem. Yes, that's fine. Right, this is good. Quick update if anyone's still here. We have finished the admin part of this. Just had to say Soja bhai. We have finished the admin part of this. Let me quickly finish the client part. Then let's try to integrate someone's components from the pull requests, and then let's test this out. I think that's what I'm excited about, really. Any questions until now? Let's take a break. 12:30. Not that बहुत मैं समझाते समझाते बता रहा हूँ कि questions होंगे. Let me push the code if it helps you. I kind of hate computer science, but I'm fairly good at it. In the process of publishing my research paper in LLM training, interesting. But I'm kind of stuck. How can I do better but still doesn't feel natural? I mean, there's very small subset of people जिनको natural लगती है coding. It was, motivation initially for money, and then you do this for a really long time, तो ये तुम्हारी life बन जाती है. Are you host this? I will try to host this before the live ends today. भाई बीजी का मॉनिटर बंद कर दो, लग ही होगा ब्रो, लैग ही होगा ब्रो. मेक सेंस. रोहित, let's see what happens. Ruby on Rails इंटर्नशिप के लिए कितनी आनी चाहिए? ठीक ठाक तो आनी चाहिए भाई. How do you handle piracy in UI? How do you protect sensitive content in UI? There's no easy way to do it. Even like Netflix gets pirated. There are weird ways you can try, but in the end, if someone wants to pirate you, they will pirate you. There's no easy way to. There's no way to get around it, right? Someone can just put a camera in front of their screen, and then there's nothing you can do. So yeah. There is a security bug in your website. Just mail it at 100xdevs@gmail.com. There are a few we're already aware of. And others, yeah, if you have something new, would love to know. This is whole truth for whoever is asking. That's the ice cream I'm using. इस वीक क्लास होगी तो यार किस चीज़ पे होगी वो देखना पड़ेगा, but there will be a class. Bro, codes in 2x reach stats in 0.25x. चलो मैं जल्दी पढ़ता हूँ. Bro, we can start learning Python. Python के लिए good resource ऐसे दिमाग में तो मेरे नहीं है. कोई प्लेलिस्ट पकड़ लो भाई और मतलब शुरू हो जाओ एकदम, मतलब जल्दी जल्दी लिखना उसको. Harsh is back. Why use Socket for creating quiz? And you can simply use REST APIs. Well, not really. It's a real-time app, right? Everyone needs to see quiz coming, new problems coming, quickly submit them. So that's why. How much DSS needed to clear? Merge stack interviews, not much. Bare minimum. Bhai, एक interview question है regarding 0 to 100 cohort. Is it live or recording session? It's a combination of both at this point. There are live sessions on the weekends. You get the recording, and then there are some offline videos that are posted as well. How to write DRM in a React app or Electron.js app? So DRM, there are a few providers. Google them. Cannot say much about it because मैंने बता दिया तो फिर मेरी वेबसाइट को हैक करोगे आके, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा. बट हाँ, यू कैन लुक एट इट. मेरे पास की स्लीप शेड्यूल क्या है? 2-3 बजे सो जाता हूँ यार. टाइपिंग स्पीड नॉट ग्रेट है, ठीक है, मतलब 80 से 100 के बीच. कैन आई स्टिल जॉइन 0 to 100? यू कैन. अर्ली बर्ड यूज़ कर लो, अभी भी चल रहा है मेरे हिसाब से. भाई फ्लटर के बारे में बता दो, क्या जानना है फ्लटर के बारे में? अब मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बताऊँ. हाउ कैन यू इंक्रीज माई टाइपिंग स्पीड? आई कीप लैगिंग दिस. वो यूज़ करो ना, typeracer.com. अगली लाइव स्ट्रीम नहीं होने वाली वैसे. वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस वेबसाइट बिकॉज क्या तुम्हें पता है कितना पैसा कमाती है? बहुत पैसा कमाती है. मतलब देयर आर लाइक अ फ्यू दीज
type racing sort of websites. Every man had to die. एंड मतलब एक तो ये भी सेम रियल टाइम कम्युनिकेशन का सिस्टम है इसमें. दूसरा, आई थिंक यू कैन गेमिफाई दिस वेल एंड ah 83. मतलब इनमें मुझे लगता है बहुत स्कोप रहता है. एक तो कि मतलब सीखने का बहुत स्कोप है इसमें. मोर देन दैट आई थिंक अ वेबसाइट लाइक दिस कैन pick up PMF very quickly. A lot of people want to increase their speed, and it's a good distribution metric. You can, if you have like a tech, you're in tech, your tech course, whatever, easy way to distribute it if you have a website like this. तो अगली किसी एक दो लाइव स्ट्रीम के बाद हम ये भी करने वाले हैं. How much do you sleep? 8 to 10 hours. Bro, wake up time around 2 तो बज ही जाते हैं आजकल इंडिया टाइम. How far off to build something like this in the cohort? Interesting. तो WebSockets cohort में मुश्किल है वैसे. Long time, at least 2 months more before you can even think of doing something like this. Super chat mode on कर दो. What is super chat mode? What is super chat mode? अच्छा तुम पैसे देने मुझे, चलो 2 पैसे. ये मुझे आता ही नहीं करना यार, वैसे कहाँ से होता है मुझे पता नहीं. ओ ये रहा ना, enable monetization to insert ads. Enable monetization to insert ads. चलो देखते हैं. जितना पैसा आएगा मैं बाउंटीज में लगा दूंगा वैसे. लो, लेट यूट्यूब ट्रोल्स. आई डोंट थिंक इससे होगा कुछ वैसे. अगर तुम, आई डोंट थिंक इससे सुपर चैट स्टार्ट होगी वैसे. हाउ डू यू सिलेक्ट आइडियाज बिफोर टेकिंग अप अ सीरियस प्रोजेक्ट? आई मेड दिस स्टार्टअप इंसर्ट एड ड्यूरिंग ब्रेक. अरे सॉरी, गलती से ऐड लग गई तुम लोगों के. सॉरी. हाउ कैन आई शो लीड कोड प्रोफाइल्स? यार मैं इसको बंद कर रहा हूँ. और भाई हमने गाने लगाए, मैं तो मोनेटाइजेशन ऑन कराओगे, मेरा चैनल बंद कराओगे. भाई सीपी इंपॉर्टेंट होती है बिल्कुल होती है. मतलब ठीक ठाक होती है. डिपेंड यार, मतलब अपने हिसाब से चूज़ करो. अर्ली बट नॉट वर्किंग. भाई तुम स्पेस दे रहे हो ना उसमें, इसलिए. इतनी वैलिडेशन कब डल गई वेबसाइट में? Oh, well, you're not wrong, sir. Give me 1 second. That's my bad. Give me 1 second. आज ही, I think आज ही वो हुआ ये. That's my bad. Discounts to early bird edit 30th submit. अब कर लो, ट्राई हो जाएगा. Alright. Is Flutter good for career development for work, remote work? हाँ भाई, मतलब हाँ, everything is good for career development for anything. Now the question is, where do you get a job? भैया, I am second year. Please tell me how to think logic for solving DSA. एक बंदा ना लाइव स्ट्रीम पे आओ इसके बाद क्लास एंड होने पे, और जब मेरे सामने का प्रॉब्लम सॉल्व करो. आई थिंक दिस डिपेंड्स अ लिटिल बिट ऑन विच सॉर्ट ऑफ वो यू आर इन, क्या कहते हैं, वेयर यू आर इन योर कोडिंग करियर. अभी तुम शुरू किए हो कि बीच में हो. बट भाई इतना क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया. मतलब कि व्हाट इज़ सो डिफिकल्ट अबाउट DSA, एंड दिस माइट जस्ट बी कमिंग आउट ऑफ प्रिविलेज. मैं तो इतनी बार कर रखा है. बट हाँ, सॉरी अबाउट दैट. बट एक पहले 6 महीने के बाद तो इट शुड बी प्रीटी सिंपल. तो अनलेस आई एम मिसिंग समथिंग. पर वो यार मेरे को नहीं लगता, मैं कभी कभी आउट ऑफ प्रिविलेज ही बात कर देता हूँ. ये तो सिंपल है. तो आई वांट टू कॉल अ फ्यू पीपल. ये मैं कोहॉर्ट में भी सोच रहा हूँ कि कोहॉर्ट में क्लास चल रही है ना, उसके बीच में 5 बच्चे रखो एकदम सिंपल वाले. तो वो बीच में इंटरप्ट करके डाउट पूछ पाए कि भाई ये समझ नहीं आया. तो कई बार मैं आगे भाग जाता हूँ. तो दैट माइट बी वाई आई एम सेइंग दिस. बट आई फील 2 करोड़ की लॉटरी लगी, क्या लग जाएगी? 2 करोड़ की लॉटरी का मतलब 2 करोड़ का डेफामेशन केस पायरेसी वाले बच्चों पे लग सकता है. देखो, मैंने बहुत अपनी तरफ से, मेरे को कोई पायरेसी करने का कोई शौक नहीं, मतलब केस करने किसी पे कोई शौक नहीं है. बट मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है जिससे हम पायरेटर्स पे पहुंच पा रहे हैं. अगर हमारे पास वीडियो आ जाती है उनकी जिसने पायरेट किया. स्टिल नॉट वर्किंग अर्ली बर्ड. कोई नहीं, चक्कर, अब मैं चेक कर देता हूँ भाई, खड़ जा.
चलना तो चाहिए अब वैसे। ओके लेट्स सी। चल रहा है ना अब? नहीं चल रहा अभी भी। हाँ कंप्लेन करनी पड़ेगी लग रहा है। 1 सेकेंड, दिस अगेन माइट जस्ट बी मी गाइस, 1 सेकेंड। डिस्काउंट्स टू 27 तारीख, हाँ ये अपडेट हुआ नहीं, सॉरी माय बैड। 30 तारीख सबमिट रिफ्रेश, 30 तारीख। अब ट्राई करो यार, अब 101% चलेगा। अब नहीं चलेगा तो मेरी चैट में तुम अच्छे से। व्हाट इज़ बेस्ट बिटवीन रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर? देखो फ्लटर इज़ बेटर जनरली हाई लेवल, बट अब तुम रिएक्ट में हो और रिएक्ट ही कर रहे हो तो रिएक्ट ही करो, मतलब इन द सेंस के रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट नेटिव कर लो। अब बहुत कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो फ्लटर ही करो। वर्किंग नाउ, थैंक यू सर। आई वॉज गुड एट मर्न, शैल आई शिफ्ट टू नेक्स्ट जेस और डेवलप्स? तो नेक्स्ट जेस तो कर ही लो और मर्न के बाद नेक्स्ट में क्या ही बचता है, कुछ ज़्यादा नहीं बचता। डेवलप्स ऐसी चीज़ है जो मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होती है, बट डेवॉप्स की अगर तुम बात कर रहे हो तो इन दैट केस येस यू शुड, नॉट द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू नो। आर यू सिंगल? येस नो, मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा भैया। तुमने ऑप्शन ही 3 दे दिया भाई, तुम 2 ऑप्शन देते, मैं तो सीधे से जवाब दे रहा था। वाई यू लुक सो फेयर? इट्स जस्ट माई स्किन के, नेवर माइंड, जस्ट किडिंग। ये लाइट लगाइए यहाँ भाई, इतना सुंदर हूँ नहीं मैं जितना लग रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 0 to 1 कोड इफ आई स्टार्ट नाउ? इट विल स्टिल टेक यू 6 months आई थिंक। C++ और रस्ट फॉर HFT एंड एल्गो, प्लीज रिप्लाई। C++ और रस्ट फॉर HFT, C और रस्ट, प्रॉब्ली नॉट C++। कंपोनेंट्स बनाना तो बाउंटीज मिलेगा फर्स्ट टाइमर, हाँ बनाओ, पर वही यार किसको मिलेगा पता नहीं। ऑलरेडी 20 पुल रिक्वेस्ट हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें मिल ही जाएगा, बट हाँ बना लो, हो सकता है मिल जाए, प्रॉबिलिटी की बात है और तुम्हारे कितना अच्छा कोड है उसकी बात है। व्हाट इज़ गुड इनफ CGPA? 6, 7.5, 7.5 के ऊपर रख लो बस। हकीकत सबरेडिट खोल दो, खोल देते। रुकी, अगर तुम चैट पे हो तो खोल दो यार। भाई कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, क्यूट हो भैया, हद है भाई। भैया जापान जाके आए हैं, सिंगल विगल पूछो मत, हा हा हा, जस्ट किडिंग। सिंगल विगल मत पूछो मतलब सिंगल विगल मत पूछो। ये आपके पीछे हैकर है किथे भाई? कोहोट प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ भाई, मतलब ये कितना ऑब्वियस सवाल है, प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग कैसे नहीं मिलेगी भाई एक कोर्स में? मतलब कोई बंदा कोर्स बना रहा है तो क्या लाइव छोड़ के फिर छोड़ देगा? ऑफ कोर्स काफ़ी लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे ना क्लासेस उसमें, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी रिकॉर्डिंग्स देयर, राइट। आपके कंट्री में कितने बजे हैं? भाई मैं इंडिया में ही हूँ, इंडिया में 12:42 हुए हैं अभी। I am never coded before. Concept from week 2 clear to 1 and 2 clear to me, but just couldn't do the assignments. Call mid logic. What should I do? तो यार अब तो असाइनमेंट्स के भी सोल्यूशन डाल रहा हूँ मैं, उनको देख देख के करो यार, फिर मतलब मैं अब क्या ही बोलूँ। असाइनमेंट्स ऐसे भाई ये नहीं करके बहुत सिंपल असाइनमेंट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स आर प्रीटी टफ, बट आई होप कि नाउ दैट यू लुक एट द सोल्यूशंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दम बेटर। एट द सेम टाइम वेरी इजी टू गेट स्टक इन ट्यूटोरियल है। अगर तुम क्लासेस में भी मुझे फॉलो कर रहे हो, असाइनमेंट भी सोल्यूशन मेरे को देख देख के कर रहे हो, तो बस कोशिश करना कि थोड़ी चीज़ें खुद भी कर लो। कोहोट ऑफर फॉर न्यू ईयर, तो न्यू ईयर पे ही आएगा ना यार, प्राइस ज़्यादा कम नहीं होगा, पर कुछ ऑफरिंग्स बताऊंगा अगर बताई तो। हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन सेकेंड ईयर? इतना तो नहीं पता भाई, क्योंकि बिन अ वाइल, एंड सेकेंड ईयर में तो वैसे ही मेरे को भी 15-15 हज़ार रुपये वाली इंटर्नशिप्स मिली थी, ले ली थी। इतना जगते हो मम्मी मारती नहीं? इतना लेट जगते हो मम्मी मारती नहीं? मारती तो है यार वैसे, पर अब उनको आदत पड़ गई है। भाई कोर्स का टेंशन है बहुत। कोर्स का क्या टेंशन है भाई? मदरा उचिहा भाई, बड़े अजीब नाम है। 100 इंजीनियर्स कोड कैसा है भाई? मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे ही पूछ रहे हो, बताओ। अच्छा ही है भाई, कैट 100 डेव्स कोड कैट है। DeFi की वीडियो कब? हाँ ये 2 ही हैं भाई मेरे दिमाग में है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ दीपक। नीवम कह रहा हूँ, नियोविम एंड DeFi both are at the top of my head. DeFi में most probably we're making something like this, an NFT marketplace or something like Uniswap, probably Uniswap only, कि हाँ ये रहने दो, यही बनाएंगे हम। बेसिकली
simple swap protocol to convert one token to another. Not a swap protocol, like literally a automated market maker, liquidity pools, things like these. इसका एक बेसिक वर्जन बनाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली. अब वो है कि सॉलिडिटी में करना है कि सोलाना में इज स्टिल इन माई हेड, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन सॉलिडिटी, नॉट अ लॉट ऑफ देम इन रस्ट. तो वही कहूँगा मैं. यार एक बात बताओ मुझे दिल से, अब मेरी पोल की बारी, मैं तुम्हारी इतनी मदद करता तो मेरी बात करो दिल से. AI को या किसी भी कोर्स, व्हाट इज़ राइट प्राइस ऑफ कोर्स? 500. अब तुम ये नहीं कि 500 बोले तो 500 ही डाल दो, सही से ही बताओ. 5000 क्या मतलब अच्छे कोर्स की, 6 महीने के कोर्स की 10,000, जिसमें मान लो सब पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें AI भी पढ़ाया जा रहा है. 80,000. 4 ही ऑप्शन है क्या? चलो उसको 15,000 कर दो फिर. अब सबने 500 सेलेक्ट किया तो देख लेना फिर. तो भाई वो तो मुझे पता ही है. मैं कह रहा हूँ कि दिल से तुम देना चाहो किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो व्हाट इज़ द राइट प्राइस जिसमें थोड़ा थोड़ा AI भी हो. 500 सेलेक्ट किया सबने. 100% पे कैसे है 500? भैया से टाइम मत पूछो, वो नरेंद्र मोदी नहीं है. गुड वन. चलो सही है. जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट व्हेन? भाई जैंगो तो थोड़ा ऑफ टॉपिक से नहीं हो जाएगा इस चैनल के लिए. करने को कर लो बट स्लाइटली ऑफ टॉपिक. भैया ये आपको इतनी नॉलेज में मैंने चालू करा, वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? प्रैक्टिस करते रहो बस. 2500 भी डाला किसी ने. नहीं जस्टिफाई हो जाएगा. चलो बोल रहे हो तो भैया चॉकलेट जगह लस्सी रख लो. घर आके नहीं लस्सी पिलाएं तुम्हें? हमारे घर आएंगे तुम्हें लस्सी पिलाएंगे. फिर मत बोलना भैया बहुत ज़्यादा सॉल्टी है. भैया एयर ड्रॉप्स का क्या करते हो? पड़े रहते हैं भाई. मैं तो साथ के साथ USDC में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड आई कीप देम एज सच. आई एम स्लाइटली बेरिश ऑन जो एयर ड्रॉप फ्री का मिल रहा है उसको एज इट इज़ होल्ड करने के लिए. यूजली तो प्राइस गिरता ही है मेरे हिसाब से. तो आई कन्वर्ट देम टू USDC एंड इमीडिएटली सेल. वाई फ्लटर? डार्ट हैज़ हाई लर्निंग कर्व. Yeah, but it's also adopted better in the industry, right? एनिमे का शौक बड़ा जापान जाके. नॉट रियली. 3,000 बेस्ट प्राइस है आई गेस. आई मीन 3,000 से 5,000 में कोई बहुत फ़र्क रहता नहीं. वैसे ही 10,000 से 15,000 में कोई फ़र्क नहीं रहता. वैसे ही 50,000 से 80,000 में कोई फ़र्क नहीं रहता. और 2 से 3 लाख वाले अलग है. मैं तो ऐसे ही समझ रहा था. प्लीज़ क्लीन योर डॉक. केड़ा डॉक भाई? एयर ड्रॉप कैसे मिलता है? वो तो यार अब टाइम नहीं है उसका. वो बेयर में जो बैठ के क्या करना होता है तुम्हें एयर ड्रॉप के लिए? तुम्हें 100 वॉलेट बनाने हैं. 100 के 100 वॉलेट में 0.1 ETH डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड देन गो थ्रू 20 प्रोटोकॉल्स. सबका कुछ खरीदो बेचो एंड इन द एंड ऑल्सो अगेन रीच 0.8 ETH बच जाएगा तुम्हारे पास. कि तुमने या 0.1 ETH का मतलब 50% तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ये सब करने में. फिर भूल जाओ. एंड देन एट सम पॉइंट इफ़ वन ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स डज एन एयर ड्रॉप यूर सॉर्टेड. तुम्हारा मतलब ब्रेक इवन हो जाता है. बट वो बहुत लंबा काम है. उसकी स्क्रिप्ट लिखो. और लिखा जाता है बॉट सोलाना एट $19 एंड सी नाउ आई एम रिच. तो सौरभ शर्मा ग्रेट, बट अगेन तुमने कितना खरीदा उससे भी फ़र्क पड़ता है ना यार. अब तुमने $19 पे एक सोलाना खरीदा तो तुम $119 का क्या करोगे? पर अगर तुमने $19 पे $1 मिलियन का खरीदा तो तुम्हारे बन गए 5 मिलियन. बड़ी बड़ी बातें, बड़े लोग बड़ी बातें. तो वही है द थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एट सच अ यंग एज और पीपल फॉर this cohort or like who are here is ke make sure you have capital to invest. Otherwise what will you do of 50% 100% gains if you're putting in 100 rupees? This is something I struggle with initially. All right जी, थोड़ी पढ़ाई भी कर लें या वही करना है? बातें ही करने हैं. Had a question, how do I contribute to your cohort website? बस यार ओपन सोर्स अगर हो गई तो कर देना, अगर नहीं हुई तो नहीं कर पाओगे. अब वही कि ओपन सोर्स करनी है कि नहीं उसके थोड़े अभी ब्लॉकर्स हैं. वील सी. आई एम अ क्रिप्टो मिलियनेयर. अरे वाह सर, क्या बात है युवराज सिंह. आओ चैनल पे कभी अपनी स्टोरी बताओ, थोड़ा लोगों को मोटिवेट करो. आज से 1 साल पहले इज़ व्हेन अनदर यूट्यूबर हु उसका नाम कौन बताएगा मैं यूट्यूब कमेंट्स में, सेड के Web3 डेड. क्या क्या. और पिछले 1 साल में ही मैंने इतना पैसा बनाया Web3 में. तो तुमने भी बनाया तो आज चैनल में बताओ थोड़ा और. देखो मैं ये नहीं कह रहा कि Web3 इज़ नॉट स्कैमी. इट इज़ स्कैमी एज फक. बट एट द सेम टाइम people who want to make money will make money and as a developer you'll at least get your salary. टोकन तुम्हारे ऊपर नीचे हो जाएंगे पर सैलरी तो बढ़िया मिल रही है ना. तो मैं तो ये कहूँगा भाई करते हैं पढ़ाई शुरू करें. चलो भाई लोग लेट्स गेट बैक इन टू इट. लेट्स अंडरस्टैंड. ओके भाई हो गया बस
पॉज, अब इसको ख़त्म करते हैं, प्रोडक्शनाइज करते हैं, देन विल गो फ्रॉम देयर. दिस पार्ट इज डन, द एडमिन UI इज डन. आई नीड टू स्टार्ट द यूज़र UI. room ID इक्वल टू ESD. अब मुझे ये कोड करना है. अब यूज़र यहाँ क्यों आ रहा है? तो मुझे राउटिंग नहीं समझ आ रही, मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पे. हो गई भी बातें, बैक टू कोडिंग. वापस आ जाना, आधे घंटे तक हो जाएगा एक. लेट मी प्ले सम सॉन्ग्स. बड़ा अच्छा गाना चला था एक. राइट भाई, इसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं अब? ओ there you go. चलो बढ़िया.
User ID and state. Name. Name. Yeah, I think इसने बनाया है. I will use it for sure. अभी मैं डमीफाई कर रहा हूँ. I will use your component if you've built it. Don't worry. Change equal to set name.
ਸਾਰੇ ਰੰਗੇ ਹਾਰੋ ਕਿਤੋਂ How? Got started. Makes sense. Question.
Start user start av.splice 0,20. Oh, fuck. Problem. What is 1 plus 2? I had a problem. चार हो गए. Next problem.
Alright, guys, time to checkpoint where we are at right now. We're getting pretty, I mean, we're not getting, we're done. The application dumb ugly version is done. We need a slightly more वेब ऐप और ऐप. ओह, द वेब ऐप इज डन. टाइटल में बिगिनर बोल के SD3 का इंटरव्यू बता दिया. ओके, लेट मी पुश इन द कोड. लेट मी checkpoint. Let's integrate the React components by people next. Before that, let's take a small break and answer a few questions in chat. But yeah, what's your thought on doing MS in USA for getting into HFTs? That's probably the most, what do you call it? Certain path to get into HFTs. Still pretty uncertain because their interviews are very tough. So doesn't necessarily mean you'll get there, but at least if you're not from a tier 1 college in India, then for sure makes sense if you want to get into an HFT to go to the US. Why can trading be considered as primary income? Probably don't do that. I don't even understand the code. Well, you will eventually. I mean, of course you don't understand it upfront. If someone else writes the same thing, I wouldn't understand their code. Everyone writes code their own way. The question is, do you understand it by the end of it? Can you create certain parts of it yourself? For example, the components that people have created, we look at them next and see how can I easily copy them over. Basically looking at that, I can understand whether or not they've written it well. कुछ ओपन सोर्स रिलेटेड था भैया. स्मॉल ओपन सोर्स स्टार्टअप जिन्हें अभी फंडिंग मिली है कहाँ से फाइंड करें? ट्विटर पे ढूंढो यार, मतलब दैट्स वेयर आई फाइंड देम. भाई पंजाबी बात कर सकते हो 1 मिनट के लिए? श्योर, बट लाइक बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे फिर. मे बी सम अदर टाइम.
ब्रो वेयर कैन यू गेट रिमोट जॉब्स और अप्लाई? ट्विटर पे फाइंड कंपनीज दैट हैव रिसेंटली रेज्ड एंड पिंग देम कि भाई प्लीज़ लेट मी, I mean that's don't do that, don't do please, but like give them a high level of this is what I do. Basically that's the easiest way to get into it. I mean find a company that has recently raised and is looking for engineers and then impress them बहुत ही ज़्यादा and then you get in. What is the next live session? Next live session will either be type racer. I really want to build some, I mean but उसका हो जाएगा बहुत ज़्यादा similar projects रहेंगे तीनों, all three would be like very similar WebSocket stuff, so maybe something else, we'll see. I'll do a poll and then you guys can decide on the poll. We can do like an automated market maker, a Web3 live as well. My only worry is they won't get views, but we'll see. भाई कहाँ से फाइंड करें? क्या देखो मैं तो अपने बताता हूँ मैंने कहाँ से फाइंड करे. मैंने ट्विटर पे देखा कि अरे फंडिंग अनाउंसमेंट हुई है, अभी भी देखता रहता हूँ क्या समवन गॉट फंडेड. ट्विटर पे न्यूज़ में कहीं ना कहीं मेरी फीड में आता है किसी ने पैसा उठाया. उसके बाद मुझे लगता ज़रूर है क्या ये लोग हायर कर रहे होंगे, या फिर जैसे Web3 है तो Web3 में वेरी ऑब्वियसली अ फ्यू कंपनीज आर मेकिंग अ लॉट इन प्रोटोकॉल फीस बिकॉज वेरी हाई ट्रेडिंग इज हैपनिंग. तो वहाँ पे आई एम श्योर दे नाउ हैव फंड्स टू हायर वन मोर इंजीनियर. तो आई वुड टारगेट दोस कंपनी. और मैं देख भी रहा हूँ कि हाँ सडनली Web3 की लॉट ऑफ, आई वुडंट कॉल देम ओल्ड कंपनीज बट लाइक OG कंपनीज जिनको कोई भाव नहीं देता था, सडनली दे आर हायरिंग, दे आर पुटिंग आउट पोस्ट्स के भाई लुकिंग फॉर वन इंजीनियर, टू इंजीनियर्स वॉट एवर. तो ठंड पै गई है. आहो ठंड पै गई है भाई. AI गर्लफ्रेंड लाइव स्ट्रीम, व्हाट डज दैट मीन? हाँ साउंड्स लाइक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि एक AI गर्लफ्रेंड बनाओ जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही हो ऑटोमेटिकली, वुड बी नाइस. भैया कुछ ML रिलेटेड अच्छे प्रोजेक्ट्स तो दे दो भाई, मेरी वीडियो तो देख लो. द सेकेंड लास्ट वीडियो में आई हैव अ फ्यू आइडियाज़. कैन यू गाइड मी ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, Web3 सिक्योरिटी, whatever the industry is called. There are a few, like every chain has one good company that's doing this. For example, there's a company called OtterSec, that's the biggest player here. Ethereum में क्या नाम है उसका भूल गया मैं. They're like obvious companies that do smart contract auditing. They're not very easy to get in though, but they I'm sure pay a lot of money because it's a big money thing. You charge a lot of money for auditing contracts. It's a big thing. That's why you get paid a lot more. Next project OpenAI API यूज़ करके. ओके डन जी. रक्षित ने बोला तो करना पड़ेगा. भैया नियर फ्यूचर में कैन यू पुट अ कैम ऑन द कीबोर्ड? वुड दैट बी यूजफुल? आई कैन. आई प्रॉब्ली कैन ऑलरेडी हैव 2 कैमरास बट श्योर इफ दैट बी यूजफुल. भैया अपने कीबोर्ड दिखाओ. यार मेरा तो मैक का कीबोर्ड है अभी, वैसे ये वाला है बट आई डिड नॉट यूज़ दिस टुडे बिकॉज आई थिंक इट्स लिटिल इरिटेटिंग. तो अभी तो मैं मैक का ही कर रहा हूँ. भैया वेट लॉस टिप्स. गलत बंदे से सवाल पूछ रहे हो. आई हैव मेड प्रोजेक्ट्स इन T3 स्टैक. वांट टू आस्क व्हाट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़ फॉर स्टार्टअप्स. यार इंटरव्यूज़ यूजुअली ऐसे होते हैं कि तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते. रिमोट जॉब की एक चीज़ बता दूंगा कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू. या तो तुम्हें आता है तुम्हें नहीं आता. बहुत ब्लेटेंट होता है वो कि हाँ तुमने ये चीज़ कई बार कर रखी है, यो सीनियर इंजीनियर, तुम गूगल करके कुछ करके उनके कोड बेस को फिक्स कर सकते हो, जो भी लाइव कोडिंग कर सकते हो तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा. देयर इज नो पॉइंट प्रिपेयरिंग. बहुत ही कैजुअल से इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें तुम झूठ बोल के कुछ निकाल नहीं सकते. 2 दिन प्रिपेयर करके कुछ निकाल नहीं सकते. यू हैव टू बी रियली गुड एट व्हाट यू डू. भाई बहुत सिंपल ऑप्टिमल सा ही फ्लो है रिमोट वर्क में कि यू आर गुड एट समथिंग, दे वांट समवन, यू गेट इन. बड़ा ही कैजुअल सा इंटरव्यू होता है. देयर इज नो रियल इंटरव्यू प्रिपेयर करो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझो. कुछ नहीं तुम्हें आता नहीं आता. कई बार नहीं आता तो भी हो जाता है कि चलो हाँ चलो मतलब इसने सोचा सही है, थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन, ही कैन थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, दिस इज गुड इनफ. भैया आपको भाई दिन में 15 घंटे कैसे निकालूँ? 15 घंटे कैसे निकालूँ? 9 घंटे की स्लीप बचा 15 घंटे. ये 15 घंटे कौन निकालता है? 15 घंटे कोई कोड करता है भी नहीं वैसे. जो भी कहता है झूठी कह रहा है तुम्हें. आई थिंक 6-7 घंटे का तुम्हारा फ़ोन मतलब दिमाग बंद है. जूम टुडे ऑल्सो जूम कर सकते हैं आफ्टर वी कंप्लीट, पर बहुत लेट हो जाएगा. पहले बता रहा हूँ 1:30 बज गया, 2:30 बजे तक ही चलेगा कम से कम. तो 2:30 बजे होगी, देख लो तुम जगह रहोगे तो. The later the stream, the lesser the people, the more the questions you can ask. But we can do a Zoom. Zoom में वही 100 बंदों की लिमिट है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. या आपके फेस पे कलर पेल दिख रहा है भाई. आई वुड ब्लेम द लाइट और आई डोंट नो, आई एम नॉट ईटिंग वेल, वन ऑफ द टू. Web3 वर्सेस AI इतना कस्प पे है ना इस टाइम पे कि अब Web3 फाइनली ऊपर जा रहा है, AI थोड़ा सैचुरेट कर रहा है कि अब मैं क्या ही बोलूँ. भैया 13 में कोई टिप्स? 13 में हूँ, कोई टिप्स? 13 में हूँ मतलब ड्रॉप कराया क्या? ये 13 साल के हो तुम? इधर वे मतलब थोड़ा रॉन्ग टाइम टू आस्क फॉर टिप. फोकस ऑन पढ़ाई, स्कूल की ज्योग्राफी पढ़ो. शुड वी बाय कोहोर्ट नाउ, वेट फॉर न्यू ईयर? देखो प्राइस तो कम नहीं होगा बट अर्ली बर्ड यूज़ कर लो, उससे कम प्राइस तो नहीं होगा.
बट ऑफरिंग्स कुछ आ रही है, देखना देख लेना। गुड नाइट, जिम जाना है 6 बजे, सो जा भाई, मुझे भी सोना चाहिए वैसे। Web3 कोहोर्ट कब लॉन्च कर रहे हैं भाई, रुक जाओ अभी, इतना मुझे एक पे फोकस कर लेना, तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसमें ही ख़त्म हो जाता हूँ भाई मैं इस कोहोर्ट में। मतलब इतनी ऑफलाइन वीडियोस आ रही हैं, आज भी एक रिकॉर्ड करी। भैया आई जस्ट लैंडेड माई फर्स्ट रिमोट जॉब एज अ वर्क इन द यूएस, दे आर गोइंग टू पे मी $15 एन आवर, डू यू थिंक दिस इज अ गुड अमाउंट फॉर अ बिगिनर? $15 एन आवर कितना होता है? 30 के US डॉलर्स होता है। हाँ भाई यही होता है, मतलब जितने मैंने भी बंदों को रेफर कर रहा हूँ इतना ही होता है। 25 लाख रुपए कम नहीं होते भाई एज अ बिगिनर, मतलब इट्स अ गुड स्टार्ट। मेरे को उससे कम ही मिलते थे, मेरी गोल्ड वन की सैलरी 21 थी, बोनस भी था बट ठीक है। ब्रो स्किन केयर रूटीन बता दो, स्किन केयर रूटीन के लिए भाई एक मीम देखना पड़ेगा तुम्हें। सर्च फॉर ब्रो स्किन केयर रूटीन ड्रॉप कर दे, D5 वीडियो होपफुली बिफोर द एंड ऑफ वीक, सॉरी एंड ऑफ वीक ही कह लो, वैसे एंड ऑफ ईयर सोचा था वैसे, बट वन ऑफ नियोविम सेटअप और D5 video will come before end of year. We'll see which one. I've started to code recently, but after seeing ये code, I'm scared. Should I proceed in this career or not? भाई क्यों, ये मुझे समझ नहीं आता। तुम ऐसे क्यों नहीं देते कि इसको मोटिवेशन कि हाँ अब मुझे भी ऐसा ही करना है कोड, और ये सब एज के साथ टाइम के साथ आ जाता है। मतलब ऐसे को मेरे को खुद तो 8-9 साल गए अब मैं कॉलेज में जब स्टार्ट किया था तब तो आई जॉइन कॉलेज इन 2014, स्टार्टेड कोड इन 2015, तब मुझे ऑलमोस्ट 9 साल होने वाले ना। दैट इज़ वाई हाउ यू लर्न टू कोड एनी कोर्सेज। हमारे टाइम पे तो यार होते नहीं थे कोर्सेज, ना ही डिजिटल कुछ होता था हमारे टाइम पे। बस ये होता था कि उस टाइम पे सीनियर्स काफ़ी कैंट थे, कॉलेज काफ़ी सही था, तो लोगों ने सही गाइड कर दिया। एंड आई डिड अ कॉम्बिनेशन ऑफ DSA एंड डेव। मैं जितना भी बोल लूँ कि हाँ DSA भाई शटअप लिखा है इसी ने भाई, इसको बैन करे पहले। मैं कितना भी कह लूँ कि DSA इज़ गुड, डेव इज़ गुड, वट एवर, मैंने तो दोनों किए हैं। कि मतलब मैंने अपना डिसेंट चंक ऑफ टाइम दिया है ICPC में जाने को एंड जीसॉक के लिए प्रिपेयर करने को। अंत में आई चूज वन, बट इट्स नॉट लाइक वन इज वर्स देन द अदर। मेरे बहुत दोस्त थे जो वर्ल्ड फाइनल्स गए थे एंड दे आर ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल, सब US में, मतलब बहुत जनता US में बैठी है हमारे बैच की। तो इट डिपेंड्स, इट्स नॉट दैट वन इज बेटर देन द अदर, बट बेसिकली इफ यू आर अर्ली राइट नाउ यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू बेसिकली पिक एंड चूज तुम्हें क्या करना है। गो गसायत मसाहैंग, पता नहीं क्या लिखा भाई। आई एम इन कोड टू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ Next.js विदाउट नॉलेज यू गेव विद द नॉलेज ऑफ। देखो यार ये मत करो, अगर तुम्हें रिएक्ट भी नहीं आता तो नेक्स्ट पे मत कूदो भी, फिर वो कन्फ्यूज जाओगे बहुत ज़्यादा। एक और बंदे ने शटअप लिख दिया भाई, तुम भी बैन हो गए। दिस वीक कोहोर्ट टॉपिक, वी विल मोस्ट प्रॉब्ली रिवाइज एवरीथिंग वी हैव डन एंड डू अ लिटिल बिट मोर रिएक्ट इज द करंट थिंग आई हैव इन माई हेड, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। हाउ टू सुपर चैट, यार मुझे भी नहीं पता, ये मुझे पता होता इतना मैं टेक्स्ट होता तो क्या ही बात होती। क्रिएट हाईलाइट वीडियो, एडिट, कस्टमाइजेशन, सुपर चैट का ऑप्शन दिख रहा है कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा ना भाई, सॉरी मुझे नहीं पता। डू वट एवर इज़ द नीड ऑफ द आवर। IIT रुड़की लॉस्ट इंटर IIT दिस ईयर, मैन ठीक है भाई, आई डोंट थिंक इट, एटलीस्ट व्हेन आई वाज देयर वी नेवर वॉन इंटर IIT। सो भैया रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर, बस भाई माफ़ करो ये सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं इतनी कोडिंग करने के बाद। कैन आई स्विच टू from QA to dev towards your experience? Yeah, you can switch from anything to dev, does not matter what the first thing is. नेक्स्ट कोड भाई ये तो खत्म होने दो। मोनेटाइजेशन में था भाई, मोनेटाइज में कर नहीं सकता, मैं गाने चला रहा हूँ तो मतलब चैनल ही बंद हो जाएगा। मे बी सेंड $, थिंगी। सही है भाई, आगे से मैं ये कर दूंगा कि मैं सुपर चैट ऑन कर दूंगा और जो सुपर चैट का सारा पैसा होगा वो बाउंटीज़ में दे दूंगा, तो नहीं करूँगा मैं ये पैसे, वैसे ही कह रहा हूँ। लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, व्हाट अबाउट इट सर? Can we contribute to the quiz app? If yes, can you please write down the tasks in the issue section? ठीक है भाई, let me finish whatever I can today and then I will create tasks. ठीक है, I would love for someone to do it. Monetization से super chat आ जाएगी but copyright भी आ सकता है। Exactly. Masters in USA 2024 or 2025, earlier the better. By how to land foreign internship tier 2, tier 3, tier 4 college. मुझे एक बात बताओ, इस सवाल के 2 हिस्से क्यों थे? इस सवाल ये क्यों नहीं था कि हाउ टू लैंड फॉर इंटर्नशिप, इसमें फ्रॉम tier 2 tier 4 कॉलेज का क्या फ़र्क है? मतलब बहुत फ़र्क, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तुम्हारा कॉलेज क्या है। आंसर रिमेन्स द सेम फॉर एनीवन, कि उनको बोलो कि भाई फ्री में मदद कर दूंगा या बहुत कम में मदद कर दूंगा, मेरे को ये आता है। इन दी एंड इट्स पहला गोल इज़ टू बिकम वेरी गुड, उसके बाद डिपेंड ऑन तुम किस लेवल में घुसना चाहते हो। अभी तुम्हें बहुत डेस्परेशन है तो एज एन इंटर्न घुस जाओ फ्री में या कम में, मतलब वट एवर 10 लाख पर एनम या इससे भी कम 5 लाख पर एनम में घुस जाओ US में, वो तो आराम से ले लेंगे तुम्हें, खुशी देंगे तुम्हें 5 लाख पर एनम। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, अगर तुम्हें ठीक आता है और तुम मतलब इतने कम में काम करने की सोच रहे हो, 6 महीने इंटर्न कर, उसके बाद बोलो भाई अब 5 से 30 कर दो प्लीज़।
कैन यू सजेस्ट वेज टू जंप फ्रॉम क्यूए टू डेव? ये बहुत स्मूथ रास्ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 5 लाख में किसी को कुछ नहीं पिंच करेगा. 5 लाख पर एनम फॉर यूएस का बंदा इज नथिंग. इट इज़ 40,000 रुपीज़ अ मंथ, जो कि इंडिया में भी लोगों के लिए कुछ नहीं होता कई बार. उससे ये होगा कि तुम घुस जाओगे और तुम थोड़ी डिपेंडेंसी बना लो उस पर. यू नो, गो इन देयर एंड बिकम वन ऑफ द कोर इंजीनियर्स एंड देन यू नो आस्क के भाई अब आई एम नो लॉन्गर एन इंटर्न. तो पहले कीप द लेबल एज इंटर्न, देन मेक द लेबल एस टी, एंड देन व्हेन यू आर एन एस टी यू कैन चार्ज वट एवर यू वांट. Alright guys, I'm supposed to give 2 exams tomorrow. Haven't started preparing. What to do? अब chill करो भाई, अब क्या करोगे? अब तो 2:30 बज गया. 1 more minute guys and we'll start coding again. 12 में भैया कोई टिप्स PCM. 12 में भैया हूँ. 12 हूँ भैया. 12 हूँ भैया मतलब भाई आई एम अंडरस्टैंडिंग द सिंटेक्स ऑफ पर्टिकुलर मेथड बट नॉट एबल टू कोड थिंग्स. यार ये बहुत कॉमन है. दिस नीड्स अ सोल्यूशन. वी नीड अ सॉलिड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. कि बहुत जनता से सुन लिया अब कि आई अंडरस्टैंड द कोड, आई एम अंडरस्टैंडिंग वॉट यू आर राइटिंग, बट आप मुझे कहोगे तो मुझसे नहीं होगा. एक पोल हो जाए जरा. स्टार्ट अ पोल. डू यू फील यू कैन अंडरस्टैंड कोड वाइल यू लुक एट इट बट can't code yourself if given the same problem? Yes, no, can't even understand code by looking at it. 3 ऑप्शन है. ऑप्शन लुकिंग समझ जाना. थर्ड ऑप्शन स्टार्ट पोल. भाई क्लाउड इंजीनियर हो तो उसका कैन आई अर्न मनी बाय मेकिंग माई ओन सोशल मीडिया वेबसाइट? बहुत मुश्किल है भाई. भैया 100 दे दो, मोमो खाना है. हर्ष भाई तुम हंसा हंसा के पागल कर देते हो. मैं तो लाइव स्ट्रीम करने का मन इसलिए करता है कि तुम आ रहे हो. प्लीज टेक द क्वेश्चन आइडियाज वाइल मेकिंग मनी वाइल गेटिंग फुल स्टैक कोहोर्ट बिकम बाउंटीज इन जनरल. प्लीज टेक द क्वेश्चन आइडियाज टू मेक मनी वाइल आई गेट गुड एट बिकमिंग अ फुल स्टैक अदर देन बाउंटीज और इन जनरल. हाँ, अपवर्क ट्राई कर लो. वैसे आई मीन यार तुम इनिशियल स्टेज में तो नहीं कमा पाओगे यार पैसा. मतलब मैं तुम एकदम स्टार्ट ही कर रहे हो तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि हाँ चलो 68%. तो मतलब अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी. अभी फोकस ऑन लर्निंग बिफोर अर्निंग. जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर. द मोर टाइम यू कैन स्पेंड ऑन लर्निंग, वो इतनी जल्दी तुम्हारी मतलब सैलरी को बढ़ाएगा कि वो यू नो इफ़ यू कैन स्पेंड अ ईयर लर्निंग तो तुम 1 महीने में उतना कमा लोगे जितना तुम 1 साल कमाने में लगाते. तो ये चीज़ का ध्यान रखो. अभी मत रश करो उस चीज़ के लिए. इसकी क्लासेस होंगी या ब्रेक? क्लासेस तो होंगी यार. किस चीज़ की होंगी ये सवाल है. अब 2 होंगी कि नहीं पता. हो सकता है 1 दिन छुट्टी हो. मतलब न्यू ईयर वाले दिन शायद छुट्टी कर दें भाई. इतना भी मतलब मुझे अब नहीं घुसना है तुम्हारी लाइफ में कि न्यू ईयर पे भी मेरे साथ ही बैठे हो. Alright guys, it's 1:30, so let's proceed. I am going to start coding again. Now it's going to be an interesting bit where we look at other people's code and see कि कैसे कैसे सबमिशंस डाले इन लोगों ने, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड बैक एंड डन है अब. अगर तुम्हें देखना हो तो मैं दिखा देता हूँ. If I start the back end here and I go to the front end and start the front end, I can go to the /admin endpoint and create a room. Let's say the room name is ASD and add questions here. What is 2 plus 2? 1, 2, 3, 4 and add a option. I can add multiple such questions. What is 2 plus 3? 5. What is 2 plus 6? 8. So on and so forth. This lets me add problems and also move to the next problem. This is the user UI, जहाँ पे users will come. Basically, people like you will come and initially it says quiz hasn't started. When the admin says next problem, you guys see the first problem. You will be given the option to select whatever you want to submit on the you'll have 4 buttons. Click on the option. After 20 seconds, this will take you to the current leaderboard. So let's wait for 10 more seconds. 10, 2, 1. There you go. तो अब इसने करंट लीडर बोर्ड दिखा दिया कि दिस इज द करंट लीडर बोर्ड. देयर आर 2 हरकीरट्स, दोनों के 0.0 हैं. नाउ whenever the admin clicks on next problem, the next problem appears. You guys can select the options again and then again after 20 seconds you'll see the leaderboard, so on and so forth. तो इतना तक बन गया है. Now let's put the front ends that people have put in. So let's go to Harkirat quiz app next. नेक्स्ट क्यों लिखा है मैंने? कहीं नेक्स्ट नहीं है इसमें, दूर दूर तक. नीचे से शुरू करते हैं. द फर्स्ट पर्सन हु पोस्टेड गेट्स शो. वाओ, फकिंग आई लव दैट. आई लव दैट. कहीं से उठाया गया. तुमने इतनी जल्दी कैसे सबमिट कर दिया? गिटहब लिंक. भाई तुम हमेशा वो लिंक डाला करो साथ में यार, लाइव प्रीव्यू लिंक. दिस इज़ गुड बट अगेन चलो
देखते हैं इसको. अब अच्छा है और पहला समझता हूँ तो मैं देख लेता हूँ, बट आगे से प्लीज़ लाइव डिप्लॉय ब्रो टेक्स लेस देन 1 सेकेंड. Source pages leaderboard. If the That's not bad. Some TypeScript here would have been nice, but ठीक है चलो. Dot slash. I mean, this is not bad. It's pretty good. It's the first submission. I might just take it, and you might, at least the leaderboard bit might be done. Username, profile picture, points. Sounds good. I think we can run with this. Card. This looks pretty good. Alright. ये इतना सुंदर, ये जितना दिख रहा है यहाँ पे इतना लग नहीं रहा कोड से कितना सुंदर होगा, या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. वाइट MG मे बी, आई डोंट नो. उस बंदे का भी वैसे अच्छा था लीडर बोर्ड. चलो लेट्स इंटीग्रेट दिस एंड विल सी. फिर npm I ये चीज़, and this is card.tsx, new folder. Oh sorry, leaderboard card.tsx, and then export function this, and leaderboard data needs to come in as an input. Already sorted yoga वैसे. Only thing is need to transform this into something else. Why is there an issue here? क्या क्या है इसमें? Points, number, data, username, profile picture and points. चलो ठीक है. ठीक है जी, leaderboard is done. Let's go to admin. नहीं, let's go to user.tsx and यहाँ पे if the current state is leaderboard, then let's render the other leaderboard. So import this from /com leaderboard / export function leaderboard leaderboard. Already included file. क्या हो गया भाई? Okay. Not map. Points. Leaderboard dot points. Username. And image अभी रहने को इतना बहुत है. Alright, let's see. Leaderboard. That's fine. Dev. Library क्यों नहीं इंस्टॉल हो रही? The hell?
npm install react dash icons. अच्छा अलग है क्या? That makes a lot of sense, sir. Sorry, दिमाग थोड़ा ब्रेन फाट हो गया था. All right. इतनी बार ज्वाइन एडमिन क्यों कॉल हो रहा है भाई? अच्छा कॉल रखे बहुत सारे. लीडर बोर्ड और ये एकदम मर गया. कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड लीडर बोर्ड डेटा. देयर यू गो. बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार इसे. 1 ASD 0 पर्सन आइकॉन. ओ टेलविंड पाई नहीं भाई. टेलविंड इन रिएक्ट. दैट्स माय बैड. Oh. Breathe in, breathe out. Control उदय, control. बैकएंड में टेलविंड डाल दिया भाई. Oh. See the question mark. Okay, let's see if that did it. Hopefully it did. टाइम आउट कम करना पड़ेगा यार. Well, I don't hate this. This is pretty good. Works for me. Let's proceed. Yeah, it's fine. ठीक है जी. Next thing is, so जी let's write down /quiz app. First person to make a pull request. Gets the first bounty. You know what the next class is going to be? Next live is going to be this /bounty $20. If I click on comment here and
whoever this guy is, which is Hustler in this case, they put their Solana address, they should just get $20. This will be the next class. बहुत मजा आएगा. ठीक है. इसको 25 था वैसे, सॉरी. एक्चुअली लीडर बोर्ड कहाँ 25 था. नेक्स्ट क्लास वी शुड डू दिस. ठीक है जी. फर्स्ट बाउंटी डन. इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ. पिंग कर देना रुकी को. यू विल गेट द $25. All right. Landing and user sign up page which asks username is done. Let's check this one out. Looks pretty good. Only thing is सबकी थीम अलग है. चलो कोई नहीं. ये वाला पेज. Enter the code to join. कोड इस पेज की ज़रूरत है वैसे. चलो बना देते हैं. हाँ मतलब ठीक है, पड़ जाएगी. Cool. Let's see. Again, live previews would be much appreciated, guys. This is landing.tss. This is username signup.tsx. अब landing की तो ज़रूरत हमें. Enter the code. Enter. All right. This looks decent actually. इसकी कमी थी बाउंटी. आई थिंक $10 ही होगी इसकी. वो भी ज़्यादा ही है इसके लिए भाई. तुमने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगाए हैं इस पर, मुझे लगता है. कोई बात नहीं. ये कहाँ जाएगा? दिस विल गो इन user.tsx. Initial bit right here. Let's create a new class. Components. Let's call it room selector.tsx. Room selector. should do यार, मेरा दिमाग ही चल रहा है इतनी रात को. Let's just do this the ugly way. Trash user.tsx में यहाँ पे going to paste this. Enter the code to join. अब इसमें you don't need the code really, पर चलो वो भी यहीं से कर लेते हैं. const code comma set code equal to use state. const name comma set name. Oh, thigh already, sorry. Name and code. कोड भी यहाँ इनपुट जाएगा. Alright, let's see. Pretty good. Enter the code to join. ये white क्यों है भाई? True. Submitted. All right. This is pretty good. Code and यहाँ पे name आ जाएगा, तो placeholder would be name. अभी भी कुछ तो इशू है. ये काला काला क्यों है अंदर से? कोई तो CSS है. Was this black originally? No, it was white, right? And chando, this looks okay. So अब बस ऐसा है, room number also comes from here and then Harkirat join leaderboard results.
कुछ तो कमी लग रही है इसमें वैसे. यार ये मैंने लाइन सेंटर oh my bad. There we go. Leaderboard results looks okay. Original page also looks okay. कलर जमा ही पुट्ठे हैं बट चलो कोई नहीं. डार्क बॉर्डर अच्छा वो डार्क थी. मैं ऐसे करो डार्क सारे हटा दो. Alright, so bounty done. Last one is left, which is the actual problem, rendering the actual problem for the user. Let's see. नीचे से start करेंगे यार. The first person, like first come first serve as I said. Wow. Oh wow. Now I'm enticed to try this person. Oh, I think we've tried this. पीछे देखा था हमने. This is also pretty good. Let me just get the problem from here. Oh, it's pretty good. Yes, that's what we like. Wow, pretty good. I don't hate this. Scores of all players, nice. Quiz, तो ये है हम जो भी उठा रहे हैं. This is pretty decent. Yeah, it's pretty good. A, B, C, D, and then maybe a submit button at the bottom. Done as Let's pick up the question bar from here. What is it called? Quiz.jsx probably. Quiz data.map index single quiz. Single quiz. What is single quiz? Oh, okay, nice. Question of something, image URL, choices. Looks good. I think this pretty much has all we need. So let's copy that over. I like this. This is pretty clean, by the way. Has all the types everywhere. So good job here. Now the quiz data. What we need, so title, choices, and image URL. String array, is it enough? No. Might just be enough. Number of questions, quiz data.length. अब ये नहीं है हमारे पास. What is current? ये भी नहीं है अपने पास.
Don't need either of them, just need a submit button. Socket.emit. Submit. User ID, problem ID, submission, room ID. Barbara. Submission commands and submission. User ID, problem ID, submission, room ID.
quiz data. Quiz details. Okay. Right. Let's try that out. All right, we broke something. Objects are not hierarchies. ID title. Oh, nice. Question. 4 options. इसको निकाल दो. Title something options, 4 options. बहुत छोटा है भाई ये. डोंट इवन थिंक अबाउट इट. जो भी सोच रहा था. नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक तो भाई कलर जमा ही पुट्ठे हैं. पुट्ठे हैं एज इन मतलब इट्स नॉट योर फॉल्ट. इट्स जस्ट यू नो समवन रोट द डार्क थीम, समवन रोट द लाइट थीम. चलो कोई नहीं. सबमिशन वर्किंग. सिलेक्ट, सबमिट. पॉइंट्स तो सबके 0 ही हैं. नेक्स्ट, सिलेक्ट, सबमिट. ये क्या है भाई? MX-8 PX-10. Next problem looks slightly better, still not great. Fourth option, first option, submit. Points तो सबके 0 है. Submit. डिस्प्ले हो गया. Pretty close, guys. Let me also put in the bounty here for the third person. UI doesn't look great if I'm being honest. मैंने first 3 उठा लिया. I'm sure there's someone who's done it better than this, but this guy did a lot of things. So let's do another bounty
15 कर लेते हैं. Done है जी. That's how much? $40-50 in bounties. And then I think we have a decent looking, at least the client side app. It's not working just yet. छोटा सा बग रह गया. Which is कि I can see the problem. I can select the options, but either the submission does not happen. Oh, issue while getting input 3. Let's see. Three. ये तो चलो मुझे पता है क्या है. My submission would be submission को number में convert कर लो. Now let's try it. Next problem is option one is ना submit. Issue while getting input 0. Not equal to 0, not equal to 1, not equal to 3. है. Oh, and होगा ना. That's my bad. EST Kirat option 1 submit. Let's create another user, call him Kirat 2 option 2 submit. Okay, moment of truth here. Are the problems getting submitted? Is the leaderboard getting generated correctly or not? थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, मैंने टाइम आउट बढ़ा दिया था. Leaderboard isn't getting generated correctly. Points सबके 0 ही हैं. Submit user ID, room ID, problem ID. Fine. ID, could user ID. हाँ. Submitting got called, which means room ID नहीं आ रहा क्या? Oh, well, that makes sense.
points minus 5. The math isn't mathing here. The points are negative. Why? Plus equal to 1000 minus 500 into. Oh, I guess that makes sense. Almost done, guys. Next problem, I see a few submit. और भी बुरा है. अब हो गया, फील आ रही है मुझे. There you go, 898 points because he submitted immediately. And if another person submits a little late, oh sorry, very good, very good. Move to the next problem. Immediately submit, and this guy will submit aram se. Now if you look at the points, let's see. ऐसा ही है, 1850, 809 looks decent. Let's look at the leaderboard. Alrighty, leaderboard looks fine as well. Done है sir. I think we're sorted. Let's talk a bit, then deploy this and then test this out. I think this works. There are some things that I feel like I'm missing, but we will see it in action. Alright, any questions? Probably have a few questions. Start time minus new date. Rachit, मेरे लिए भी कर दो, भूल लग गई. ASD is more popular, man. Alright, let me push this. Complete. जैंगो कर रहा हूँ, सही है. हाँ बढ़िया भाई. जैंगो में तो मुझे कंपनी में पता जो हायर करती है बहुत तगड़ी. तुम्हारी अच्छी हो तो बताओ. 50 लाख देते हैं साल का, ना ज़्यादा ना कम. और इक्विटी. आई डिप्लॉय ऑन नेटलीफाई. कर दो भाई. कोड तो मैंने अब कर ही दिया है. कोई डिप्लॉय करता है तो कर दो. गिटहब रिव्यूज़ करने हैं, कर सकते हैं. लेट्स डू इट ऑन अ जूम. दो जूम, चलो यार जूम ही कर लेते हैं. अब सबको जूम ही करना है तो कोई चक्कर नहीं. डिप्लॉय अपन बाद में कर लेंगे. इस टाइपस्क्रिप्ट बेस्ट फॉर प्रोडक्शन? प्रॉब्ली. जूम स्टार्ट कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेस्ट व्हाट वी हैव बिल्ट. तो मुझे 2 मिनट दे दो, मैं डिप्लॉय कर दूँ, फिर कर लें. बस 2 मिनट लगेंगे. ऑलराइट.
जस्ट वांट टू मेक श्योर वी कैन टेस्ट व्हाट वी हैव डन, ऑल्दो आई फील कि मैं इसको डालूंगा और ये पक्का फटेगा, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे कहीं ट्राई कैच कुछ नहीं डाला है, तुम में से कोई नोटोरियस चीज़ करने वाला है मुझे लग रहा है. बट ठीक है, गिव मी जस्ट 10 minutes, लेट मी डिप्लॉय दिस, लेट्स टेस्ट दिस एंड देन वील डू अ ज़ूम. ठीक है. $80. All right. भाई रिएक्ट कहाँ है? हाँ, ओ यार वीट. ऑलराइट, बस कर रहे हैं जूम भाई 10 मिनट. आई वांट टू आस्क, to create a dashboard with real-time monitoring, which technology should I use for the backend? Connection should I use? WebSocket or normal HTTP would work? Normal HTTP would work. You don't really need things to be that real-time. You can just poll every 10 seconds, every 1 minute or so. Bro, look at other PRs as well. हाँ भाई, बात तो सही बोल रहे हो तुम यार. Rather than GitHub review, let's do a what people have built review. 25 हैं तो 25 के 25 देखेंगे हम. Start from the top. जल्दी रिव्यू करेंगे. I like it. All the screens have been built. It's not as pretty, if I'm being honest. तो इस टाइम पे मुझे चाहिए था कि जल्दी से जल्दी the cleanest thing gets built, or like, I mean, it's pretty good actually. It's not bad, but हाँ. Now like this page is like a little, not great. Would have been nice और थोड़ा ज़्यादा सुंदर होता, but great try here. Create, देखें ये जरा. Again, no URL to test it out, but I just see one screenshot. अब देखो यहीं पे मैं छोड़ दूँगा. तो वही है, इस टाइम पे would at the very least would have been nice to preview it somewhere. This is pretty good. I will look at this later on. Let me, how do I keep a note of this? Bookmark कर लेते हैं, because ये मुझे डालना है, तो I will probably use your thingy. I have a LinkedIn URL. Why do I not have a URL with preview, sir? डाला करो यार. No description, no review. ये तो सबसे worst thing you can do. LGTM सर. 2 3 4 5 6 10. All right. This looks good. There is a URL. Pretty plain, not great, not bad. Somewhere in the middle. Not able to go through beyond this. Looks decent. No preview URL. Looks decent. No preview URL. Looks decent. No preview URL. All three are the same. Looks decent. Again, not great. Good, not great.
देखो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ये किसी रिक्रूटर को भेजा तो वो देख के खुश नहीं होने वाला है। जस्ट सेइंग दैट, या फिर कोई सीटी हो गई, समवन वांट्स टू हायर एंड आई सेंड देम दिस यूआई, द ओनली थिंग यू हैव टू इम्प्रेस समवन ऑन हियर इज हाउ क्लीन इट लुक्स। बाकी सब तो बना ही रहा है ना, बैकएंड तो मैं बना ही रहा था, तो समवन नीडेड एनिमेशन डालते, कुछ तो बढ़िया डालते, वुड हैव बीन नाइस। सिंपल इनपुट बॉक्सेस तो मतलब कोई भी बना लेगा। ये अच्छा है, मेंटीमीटर को छापा है थोड़ा बहुत, तो इट्स नॉट बैड। बट अगेन नो प्रीव्यू यूआरएल, pretty rudimentary, no preview URL, pretty rudimentary. And this one's decent actually, not bad. This one's actually pretty good. We'll bookmark this as well. अगर ये एनिमेट करता है तो, I mean नहीं भी करता तो भी just pretty good. Live link, love to see it. Page 1, I like this one. Join. बाकी के पेजेस कहाँ हैं सर? ये एक ही है अभी, अच्छा एक ही है अभी। नॉट बैड, दिस इज प्रीटी गुड, आई वुड हैव यूज्ड दिस अगर थोड़ा पहले आया होता तो। दिस इज डिसेंट यूआई। लीडर बोर्ड लुक्स नाइस, नो प्रीव्यू यूआरएल। लीडर बोर्ड बनाया तो लोगों ने काफ़ी ने, बट प्रीव्यू यूआरएल किसी का नहीं है। ओके लेट्स सी वीडियो, वीडियो इज ऑल्सो नॉट बैड, दिस लुक्स डिसेंट, प्रीटी मिनिमलिस्टिक। या दिस लुक्स नाइस, आई वुड हैव यूज्ड दिस। अगर मैं पहले पहुंचा तो आई वुड हैव यूज्ड दिस। आई लाइक दिस, इसकी बाउंड्री करते हैं। ये अच्छा बनाया, काफ़ी क्लीन है, मतलब ये मैं भेज सकता हूँ किसी रिक्रूटर को कि देखो ये बनाए। एंड ये वाला तो था ही भाई, ये भी काफ़ी अच्छा था, इसको भी करी दे, नहीं इसको करी दी थी ना शायद, हाँ करी दी। डन है सर, डिप्लॉयमेंट फेल्ड एज ऑलवेज भाई, इग्नोर टाइप एरर्स, रिएक्ट बिल्ड और सेल। चलो भाई जूम करते हैं, अब तो मैं और वेट नहीं कराऊंगा मैं। गिव मी 2 minutes, लेट मी लॉग इन, लेट्स डू अ जूम, लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस हियर। यहाँ जाओ, जूम, साइन इन, गूगल। सौ की लिमिट है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, लिंक डाल दूंगा, उसके बाद whoever can get in great, जो नहीं आ पा रहे हैं eventually people leave, so you can come back at some point. Alright, let's see. Join with computer audio, mic is right, participants invite, copy invite code. Are you guys ready? 3 2 1 go. आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। And let me share screen again, let me remove my, इसको क्या हो गया, मैं कहाँ गया यहाँ, नेवर माइंड। माई प्लेजर, प्लीज़ मेंशन, ये मैंने लिंक से ही डाला है क्या? ओ अजीब सा डाल दिया, रुको, लिंक नहीं यही है भाई। आवाज़ घूम के आ रही है भाई, म्यूट कर लो प्लीज़। बेटर इनवाइट लिंक, भाई कुछ ऐसा वैसा मत दिखा देना लाइव स्ट्रीम में। कैन यू गाइज हियर मी ऑन द जूम? कोई अनम्यूट करके हाँ बोलो। ओके कूल, ठीक है। आज काफ़ी हम्बल क्राउड आया है, लोग वरना यूजली बम्बार्ड कर देते हैं। क्या हाल चाल भाई लोग? एनी क्वेश्चंस आई कैन हेल्प आंसर? सबकी वीडियो भी ऑफ है। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक एक वेबसाइट थी, मतलब एक स्टार्टअप था, उनकी वेबसाइट थी, दे हैव, बोलो बोलो तना। they have this thing only, join wait list, like they are developing their product. Okay, so they were hiring for a front end developer. मैंने उनके लिए एक like बना के उनको pitch किया था, revamped version. Okay, so can you? Oh sorry, मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया भाई गलती से, और लोगों को कर रहा था। हाँ दिखाओ दिखाओ, भेजो, आई विल रिव्यू इट, चैट में डाल दो, तने चैट में डाल दो। जी जी जी। आवाज़ घूम के आ रही है। ऑल राइट, कोई और सवाल पूछेगा?
किसी ने तो अपना कैमरा ऑन किया फिर बंद भी कर दिया. ऑलराइट, लेट्स सी दिस. बढ़िया बढ़िया, आप बताओ. भाई आवाज़ बहुत घूम के आ रही है, म्यूट कर लो यार. ऑलराइट, लेट्स रिव्यू. सर कीरत, फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बड़े बिग फैन है आपके सर. थैंक यू सर. सर कुछ पूछना था. जैसे अभी मैं इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ. बट अभी सर कहीं इंटर्न लग नहीं पा रही है सर. क्या करना चाहिए? एक्चुअली मेरे कॉलेज में अभी पूरा ये सेमेस्टर है ऑफ रहता है इंटर्न के लिए, और मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया लेकिन अभी तक इंटर्न हो लग नहीं पा रही मेरी. कौन से कॉलेज में हो, कौन से ईयर में हो, क्या एक्सपीरियंस है? सर मैं थर्ड ईयर में हूँ NIT कुरुक्षेत्र, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है मेरी. बट हाँ सर, मैंने मतलब बैकएंड कर रहा हूँ, फ्रंट एंड तो कर रखा है, रिएक्ट आता है. तो हाँ सर, उसी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अभी. कैंपस में कंपनियाँ नहीं आ रही क्या? बहुत. तो NIT में? नो सर, बहुत बहुत गंदी आदत चल रही है सर. अरे बाप रे. सर NIT IIT सब कहने की बात है सर, वो जेई वाले बच्चों को ही अच्छी लगती है. बाद में सर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इस समय तो. गॉट इट, मेक सेंस. तो यार इंटर्न में तुम्हारी कॉम्प एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले ये बताओ, वहाँ से थोड़ा आसान होगा जवाब देना. एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ. कॉम्प एक्सपेक्टेशन, कंपनसेशन, मतलब कितना पैसा चाहिए तुम्हें महीने का? सर अभी तो मेरी ये कंडीशन है ना कि मुझे कोई अच्छी कंपनी मिल जाए जो कि मुझे अच्छा वर्क एक्सपीरियंस दे दे, दैट्स इनफ फॉर मी. सही है, दैट्स गुड. तो वही है यार, मतलब देखो 30,000 रुपीज़ अ मंथ टाइप पे रिमोट नौकरी तुम्हें निकल सकती है किसी स्टार्टअप में, अगर तुम ढंग से टारगेट करो उनको. मतलब अब मैंने कभी किया नहीं है ये, मतलब ये वाली इंटर्नशिप वाली चीज़ तो. बट हाउ वुड आई डू दिस टुडे इफ आई वर टू डू दिस? मान लो आई एम इन NIT और तुम्हें कितना बैकएंड फ्रंट एंड आता है, तुम सब बना लोगे पूरी? सर फ्रंट एंड आता है मुझे डिसेंट. बैकएंड अभी मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हाँ मैं कर रहा हूँ. गॉट इट. रिएक्ट आता है सर मुझे ठीक. गॉट इट, दैट मेक्स सेंस. एक मिनट यार. सर DSA भी मेरे स्ट्रांग है, मतलब DSA काफ़ी ठीक है, कर रहा हूँ. मतलब DSA मेरा कंप्लीट है, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ रोज. गॉट इट. हाँ मतलब देखो, जो रास्ता मैं बताऊंगा उसमें DSA वोंट भी सुपर हेल्पफुल. हाँ ठीक है, तुम्हें आता है तो बहुत बढ़िया. और मैं ये सोच रहा हूँ यार, हाउ वुड आई अप्रोच दिस. तो यार देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे एक बंदा है, उसकी अभी नौकरी लगी है, उसका नाम अभिषेक है. तो उसकी, जिस बंदे ने उसे हायर किया, ही बेसिकली इज़ नाउ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप. वही है, मतलब ऐसे तो बहुत बंदे मिल जाएंगे जो आर ट्राइंग अ स्टार्टअप, हैव रेज्ड अ वेरी स्मॉल राउंड, डेस्परेटली नीड एन इंजीनियर. तो उनको अगर तुम टारगेट करोगे, मतलब उनसे अगर तुम, अब वही उन तक पहुंचोगे कैसे तुम? जैसे अभिषेक के केस में ये था कि इट टुक हिम. यही प्रॉब्लम है सर, मैं समझ नहीं आ रहा कि अप्रोच कैसे करूं. मतलब आई नो वेरी, मतलब बहुत अच्छे लोग जानता हूं कि ये कंपनी में ये कर रहे हैं, बट सर अप्रोचिंग इज द मेन प्रॉब्लम सर. लिंक्डइन पे अप्लाई करने पे कोई रिस्पांस नहीं आता, फिर इंटरेस्टेड लिखने का कोई सेंस नहीं होता सर, आप जान ही रहे हो. हाँ वो तो ये इशू है सर. हाँ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कि हाँ मतलब. सर कैंपस में तो सर ये सिचुएशन है ना. क्या? 1 सेकंड, शायद मेरी आवाज़ थोड़ी तेज है, मैं स्लो कर देता हूँ, सॉरी. नहीं सुना. सर कैंपस में तो ये सिचुएशन है कि कंपनीज नहीं आ रही हैं. गॉट इट. तुम्हारे में नहीं आ रही तो फिर तो कहीं भी नहीं आ रही है. अगर NIT में नहीं आ रही है कंपनियाँ. हाउ वुड आई अप्रोच अ कंपनी टुडे इफ आई नीड एन इंटर्नशिप, कंसिडरिंग आई नो डिसेंट फ्रंट एंड और डिसेंट बैक एंड. नंबर 1, यू नीड टू फाइंड अ कंपनी. अप्रोच करना दूसरी चीज़ है. सबसे पहले तुम्हें कंपनी ढूंढनी है जो शायद हायर कर ले तुम एज एन इंटर्न. अगर तुम इंडिया के बाहर ढूंढना चाह रहे हो ये चीज़, तो वन प्लेस यू कैन गो टू इज़, दिस माइट नॉट वर्क मोस्ट प्रॉब्ली, बट YC के पेज पे जाके देखोगे YC की इस बार कौन सी कंपनी है जिन्होंने रेस किया है, या फिर पुरानी कंपनियाँ. और आपने कोहोर्ट में बोला था, आप नहीं बताओगे. तो मैं और क्या ही बोलूँ उसमें. नहीं अब नहीं बता सकता. छोड़ो कुछ नहीं मतलब. प्लीज एक बार रिपीट करिएगा, आपने क्या बोला? हाँ मैंने बोला कि जनरली यू हैव टू फाइंड स्टार्टअप्स हु कैन हु हैव रिसेंटली रेस्ड. देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तुम्हें ये चीज़ करनी है तो उसके लिए तुम कुछ भी करके उस फाउंडर तक पहुँचो. लेकिन यार ये कोई ये चीज़ वही चीज़ जैसे इंटर्न में चलेगी नहीं, क्योंकि जो कंपनी रेस किया अभी उसको बंदा चाहिए डेस्परेटली कि यू नो एज सुन एज आई, you know they don't want an intern. Basically intern is more for you know chill companies जिनका है कि चलो एक बैच ऑफ इंटर्न हायर करेंगे and then they will help. मतलब तुम भूल जाओ तुम एज एन इंटर्न ज्वाइन करो. तुम्हें पहली बात अपनी स्किल्स को तो अच्छा करना है कि तुम एज ऑलमोस्ट फुल टाइम एम्प्लॉय ही ज्वाइन करो, क्योंकि कोई आज की डेट में सिखा नहीं रहा है कि हाँ यू नो इंटर्न को हायर करते हैं, उसको सिखाएंगे थोड़े कम पैसे में एंड देन फुल टाइम कन्वर्ट करेंगे. ऐसा मुझे लगता है. तो फर्स्टली मेक श्योर यू आर वेरी गुड. वंस यू नो यू आर वेरी गुड कि मतलब तुम आज की डेट में चाहो तो इस कंपनी में तुम फुल टाइम भी अप्लाई कर सकते हो या इनकी हेल्प कर सकते हो, तो यू कैन डू वन ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1, अगर कोई ओपन सोर्स कंपनी है तो फिर तो उसके कोड बेस में पागलों की तरह
कंट्रीब्यूट करने लग जाओ. अगर तुम एज एन इंटर्न जाना चाह रहे हो तो वो आज मतलब देखो इंडियन तुम एक्सपीरियंस चाहिए तुम कह रहे हो. बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में. तुम लोगों को आवाज़ आ रही है क्या किसी को? नो सर प्रॉपर आ रही भाई है. तुम्हारी साइड कुछ इशू है. नहीं नहीं नहीं. सर प्रॉपर आ रही है. नहीं सर प्रॉपर है. तो सर आप बोलिए. तो पहली चीज़ थी कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ढूंढो. तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम उसमें फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम करने लग जाओ. मैं ऐसे ही करता हूँ. मैं किसी ओपन सोर्स कंपनी में जाना होता है, मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ. मैं उसी तरीके से इशूज़ पिक करता हूँ और काम करने लग जाता हूँ. दैट इज़ वन. तुम्हारा एक्सपीरियंस बन गया, तुम्हारा पैसा नहीं बना. अगर चीज़ अच्छी रही वहाँ तो वो तुमसे मतलब बात करके शायद तुम्हें हायर भी कर लें. दैट्स वन. नंबर 2 इज़ कि तुम 3 आए थे दिमाग में, कहाँ गए? अच्छे थे यार तीनों ये. 1 मिनट. एक ओपन सोर्स, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं तुम कैसे अप्लाई करते हो? तो तुम ओपन सोर्स कंपनी ढूंढो, उसके कोड बेस में अप्लाई करो. या फिर प्रोजेक्ट बना के पिच कर सकते हो. यस एग्जैक्टली. आ गया था. शॉर्टलिस्टिंग में भी एक बंदे ने वाला प्रोजेक्ट डाल के कर सकते हो, ये अच्छा है. एक चीज़ और है मेरे दिमाग में, सॉरी. कुछ नीश सीख जाओ. बहुत स्टार्टअप्स हैं जैसे आज के डेट में तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स आर एआई रिलेटेड. तो कुछ नीश ऐसी चीज़ सीख जाओ जो इनको चाहिए, तो तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाए एटलीस्ट, कि उनको बता के कि देखो मैंने ये चीज़ कर रखी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के डेट में होगा कि मैंने एजेंट्स बनाए हुए हैं और किसी कंपनी को बोलो देखो ये रहा मेरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने एजेंट्स बनाए हुए हैं यूजिंग द स्पेसिफिक फैंसी लाइब्रेरी. फिर उनको होगा एटलीस्ट चलो इसको लाइब्रेरी आती है, देन दे एटलीस्ट गिव यू एन इंटरव्यू. हाँ तो ये हाई लेवल था. और भी कोई कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, करो प्लीज़. सर एक उसके लिए वो कर सकते हैं कि आजकल कंपनी स्केल आउट करने के लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मतलब डेवलपर चाहती हैं, तो उस तरीके का प्रोजेक्ट्स होगा तो उसमें हेल्प करता है. क्योंकि मैंने बनाया है उस पर, तो मेरे को 15 कंपनी में अप्लाई करता तो आ जाता है रिस्पॉन्स कुछ कंपनी से. एक बार अपना प्रोजेक्ट डाल दोगे गिटहब चैट में ताकि लोग पढ़ लें एक बार. एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो रेपरेट पे बाउंड्रीज होती है ना, तो अगर तुम उसे सोलो करते हो तो ज़्यादातर मोस्टली स्टार्टअप ओनर्स में उन बाउंड्रीज को भेजते रेपरेट पे ताकि तुम उन्हें सोल्व कर सको. एंड देन जब तुम सोल्व कर सकते हो तो फिर तुम उसमें कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली फिर उन स्टार्टअप के फाउंडर्स को. ऐसे मुझे एक इंटर्नशिप मिली थी यूएस रिमोट के लिए. सो मेरा ये वे था. वो छोटी मोटी बाउंड्रीज होती है जिनमें मतलब काफ़ी आसान होती है, उनको बस टाइम बचाना होता है. सो दैट्स व्हाई एक तरीका ये भी है. ये चलता है क्या मतलब डज सॉरी और रेप्लिक पे चलता है. गॉट इट. किसी ने ट्राई किया है यहाँ पे रेपलेट मतलब ये सॉरी बाउंटी, और किसने जीती है क्या? हाँ मतलब बाउंटीज छोटी मोटी होती है. जैसे शुरुआत में होती है $30 या $40 के समथिंग की होती है. राइट. तो वो एंड एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा नहीं होते उसमें, 4 या 5 एप्लीकेंट्स होते हैं. तो मोस्टली चांसेस में तुम्हारा हो ही जाता है. फिर क्या अगर तुम्हारी बाउंड्रीज में उसने सिलेक्ट कर लिया, तो जो मेरा इंटर्नशिप के लिए मैंने जो जिसे अप्लाई किया था उसने मुझे बाउंड्री से एक्सेप्ट किया था. एंड उसका जो मैंने टास्क कंप्लीट किया था देन मैंने उनको कांटेक्ट किया था. एंड उसके बाद मुझे वो इंटर्नशिप मिली थी. सो दैट्स आकाश भाई Hariket bhai, I had one thing to say actually. So I'm actually 23 right now and I'm a tech lead. And I have done BCA. Like that's I am in my last year. I'm not tech lead in a startup in Mumbai. I have watched your video from beginning, like from years, and you have inspired me so much. So just wanted to say thank you. All right, thank you. Yeah, congrats. Thank you. Yeah. Excuse me. So my question. Sorry, but actually मेरा question ये था हरिकेत भाई कि how to scale from here. Like I want to get in a mainstream company from startup. Like what should be the way? What do you mean mainstream? You mean big company? Like Big companies, yeah, with like more established company with like where I can grow and I can learn more things, more complex. I can work on more complex projects. got it. So यार देखो, if you want to work in a big company in outside India, तो you will have to be very good at a niche technology. Period. Full stop. और कोई रास्ता है नहीं. या तो तुम इंडिया में बड़ी कंपनी ढूंढो. इंडिया में there are good startups like Razer पे very good startup when it comes to learning. अगर तुम्हें सीखना ही है कुछ, might not pay plan धमाका, but it's a good company to learn. तो इंडिया में you can find these. या फिर अगर तुम्हें है कि मुझे बड़ी कंपनी में चाहिए और पैसा भी चाहिए, then you'll have to get really good at one niche technology that someone needs very desperately, and that's how you get in. Got it. Thank you. Okay. Manan, go for it. Manan, go for it. Yeah, so I have a really similar story. I'm still not a graduate, but I have 4 years of experience, and I've worked with only contract, only on contract basis, not permanently with the company. And I feel like I'm not getting a good enough pay even now with so much of experience. So what would be your
Like, what would be your advice for that? Oh my god, sorry, what happened here? Somebody opened up the whiteboard, I guess. किसको access दे दिया? Thanks guys. So do you mind sharing a little bit how much do you make right now? What's your hourly? How many hours do you work every week? My package is 10 LPA right now. Got it. And this is remote? Not much. Yeah, this is fully remote. And this is the companies in India or या फिर बाहर है? Indian company है, but the project is for a like outside client. तो मतलब वही है, कंसल्टेंसी टाइप है. हाँ जी. गॉट इट. हाँ, मतलब वही है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो है कंसल्टेंसी में तो तुम्हें इंडियन प्राइसेस ही मिलेंगे. तो कंसल्ट में वैसे मतलब मेरे को जनरली मतलब तुम खुद ही मतलब काटना शुरू करो. ये तो मतलब बहुत बेर मिनिमम वैसे एडवाइस है कि डोंट वर्क फॉर अ कंसल्ट. इफ़ यू आर गुड इन योर स्किल्स स्टार्ट अप्रोचिंग कंपनीज डायरेक्टली. दैट साइड वो शुरू में थोड़ा हार्ड होगा. तो नाउ द क्वेश्चन इज The problem is ये जो कंपनी है ना, जैसे it is a very big company and they are okay to pay me really well. But वही graduation नहीं है, that's a requirement there. तो वो तो hire करना चाहते थे, but graduation नहीं थी, तो they said wait until you complete your graduation and then we'll hire you. Got it. तो अभी तुम क्या हो वहाँ पे, इंटर्न हो क्या? नहीं, I'm working through an agency with that company. Oh, अच्छा, you're saying the main company जिसके तुम काम कर रहे हो, they are open to hiring you. Yes. और तुम्हारी एजेंसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे? होगी उनको, बट वो पे आउट करने के लिए रेडी है. ओह अच्छा. बट देयर सेइंग कि तुम अभी ग्रेजुएट. देखो यार, अगर कोई बाहर की कंपनी है मोस्टली उसको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. बिकॉज आई मीन दिस इज़ अ वेरी वियर्ड यू नो वो टू से कि तुम अभी ग्रेजुएट में हो तो अभी ग्रेजुएट हो जाओ फिर बात करेंगे. वैसे तुम्हें कितनी देर है ग्रेजुएट होने में भी? 1.5 साल. मतलब वही, दिस इज जस्ट देम ट्राइंग टू सेव मनी फ्रॉम बीइंग ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद जो तुम दिल बी ओपन टू गिविंग बिगर पैकेज. तो हाई लेवल दिस इज जस्ट अ वे टू यू नो, ये होता ही है, दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज जस्ट वन वे टू यू नो. वो मैनेजर से मेरी हुई थी बात. ही सेड वो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कंपनी में, ऐसा ही है बिकॉज वो हायरार्की है, तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर. आई गेस. कैन नॉट. तो अब इसमें तुम मतलब देखो यार, वैसे तो मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा ऑफिसी है यू नो. इफ़ यू वांट शी कैन गिव इट. अब तुम इसमें एक ही चीज़ कर सकते हो कि यू गेट रियली गुड हियर, या पे तुम डिपेंडेंसी डाल दो इन पे एंड देन यू नो फाइंड अ बेटर जॉब. तुम 10 पे हो तो 20 वाली को ढूंढो एंड देन इनको बोलो कि भाई मुझे 20 वाली मिल गई, मैं रुक रहा हूँ या जा रहा हूँ. देन आई हैव सीन फिर ये लोग आ जाते हैं. मतलब ये मेरे साथ कई बार हुआ है. एंड देन इवेंचुअली यू नो व्हेन आई हैव फाउंड अनदर जॉब इज़ व्हेन दे से कि नहीं चलो हमसे भी ले लो. एंड देन फिर लेकिन तुम्हारी दूसरी नौकरी लग जाती है तो यू नो यू डोंट गो बैक. तो हाई लेवल दैट्स ऑल. अगर तुम्हें कोई स्क्वीज़ नहीं कर रहा है मतलब नहीं दे रहा है पैसे तो उसको स्क्वीज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है. बेसिकली लुक आउट. इस रास्ते को यही समझो, है तो है, नहीं है तो नहीं है. एंड अब वही स्टार्ट लुकिंग आउट, फाइंड अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड वंस यू हैव समथिंग एल्स इन हैंड देन फील फ्री टू रीनेगोशिएट हियर इफ यू फील लाइक इट. Alright, another question that I had, a really small one. मेरे को 3 साल से आई एम जस्ट वर्किंग ऑन फ्रंट एंड. मैंने काफ़ी बार ट्राई किया बैकएंड सीखने का, बैकएंड ट्राई करने का. आई मीन आई कैन सेट अप एन एक्सप्रेस सर्वर, पर मेरे को वो बहुत बोरिंग लगता है. आई नेवर फाइंड इट इंटरेस्टिंग. तो इज इट ओके इफ आई जस्ट कंटिन्यू विद द फ्रंट एंड? आई नो रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव, और अभी मैं रिएक्ट नेटिव में ही काम कर रहा हूँ मेजरली. देखो मतलब देयर इज़ नो हार्म अगर मतलब कि तुम्हें समझ आ जाए कोड, तुम्हें इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर तुम्हें समझ आ जाए. मतलब कई बार तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ कट जाएंगी कहीं, क्योंकि नो मोस्ट कंपनीज विल नॉट हैव यू नो फ्रंट एंड वर्क ऑल डे लॉन्ग. तो कभी कभी हो सकता है तुम्हें कहीं घुसना पड़ जाए. तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. वो थोड़ा सा माइल्डली येलो फ्लैग हो जाता है कि ये बंदा ओपन क्यों नहीं है बैकएंड करने को. तो मतलब तुम्हें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर तुम्हें समझ आ जाए कोड एट द वेरी लीस्ट. ओके, गॉट इट. स्पेशलिटी चेंज करनी जरूरी होती है क्या? एक मिनट, वर्ष सॉरी, क्या चेंज करनी जरूरी होती है? लाइक जैसे अभी कौन कह रहा था, आयुष्मान कह रहा था ना, लाइक मैं भी जनरली फ्रंट एंड कंट्रीब्यूट करता हूँ. शायद मेरी यूआई भी देखी होगी, ठीक ठाक लगती है. बट मैं जनरली डेवऑप्स के ऊपर भी थोड़ा इंटरेस्टेड था, पर मैं एज अ स्पेशलिस्ट खुद को फ्रंट एंड इंजीनियर ही मानता हूँ. तो आपका क्या कहना है कि जनरली करियर जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है तो स्पेशलिटी चेंज करनी चाहिए या कैसे नेविगेट करना चाहिए कि आप एक जैसे वो टी शेप लर्निंग होती है या पाई शेप लर्निंग होती है, तो उसके बारे में आप बता पाओ. हाँ मतलब देखो जनरली रूल ऑफ थंब ये है कि स्पेशलिस्ट रहो, एक चीज़ में बहुत अच्छे हो जाओ. अगर इफ दैट इज़ रिएक्ट फॉर यू दैट इज़ फाइन. द ओनली थिंग इज डोंट बी स्कैर्ड कि नहीं मुझे बैकएंड नहीं करना, मेरे को डर लगता है, बस उससे मत करो. बट जनरली मैं जिस तरीके से हायरिंग देख रहा हूँ, ऑल हायरिंग पोस्ट आर कमिंग लाइक दिस ओनली कि वी नीड अ स्टेलर रिएक्ट नेटिव इंजीनियर टू जॉइन अस एसएप. तो यू नो
उसमें बहुत अच्छा होना इज़ मच बेटर दैन कि थोड़ा बहुत रिएक्ट नेटिव आता है, थोड़ा बहुत रिएक्ट आता है, थोड़ा बहुत बैकेंड आता है. थोड़ा बहुत एआई से भी खेल लेता है इंसान वगैरह, सारी चीजें आनी चाहिए, या किसी एक चीज में से स्पेशलाइज करके, जैसे कोई बैकएंड का बंदा है हम्म, तो अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना आता हो तो वो एक मतलब दो इंसान का काम कर रहा है. करेक्ट. और आप भी बोलते हो कि अगर कोई फ्रंट एंड का बंदा है और उसको डिजाइन भी आता है करेक्ट. तो वो एक और तगड़ा मतलब मार्केटिंग भी हैंडल कर लेगा वो बंदा. करेक्ट. और अगर मान लो बैकएंड का बंदा है, एमएल वगैरह भी आता है, तो वो शायद और 3-4 आदमी का काम कर पाएगा. अरे यार ये कौन कर रहा है. करेक्ट. तो उस सेंस में बोल रहा हूँ. हाँ. 50 चीजें मैंने आपका कोर्स इसीलिए लिया क्योंकि मुझे डेवऑप्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, डॉकराइज करना आता था, पर क्लाउड नेटिव टूल्स के बारे में नहीं पता था. तो मैं अपनी स्टैक को लाइक फुलफिल करना चाहता हूँ डेवऑप्स के एरिया में, पर मैं अपने करियर को कैसे प्रोग्रेस करूँ, लाइक ले जाऊँ आगे. फ्रंट एंड तो कर लिया, फुल स्टैक का काम भी डेटाबेस से बात कर लेता हूँ. मैं सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक बात पूछनी थी. एक सेकंड, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ. तो यार इसमें मतलब वो ये कि अरे यार कौन, चलो इसको खुला ही रहना यार. सो इरिटेटिंग, इसको मैं बंद कैसे करूँ. वेट एक सेकंड दो यार. जो भी कर रहे बंद कर दो यार. होस्ट ओनली चलो हो गया. इसमें बस एक चीज़ कहूँगा कि डज नॉट, यू डोंट रियली नीड, मतलब दिस बेसिकली तुम्हें क्लाउड नेटिव सीखने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें रिएक्ट में रिएक्ट इतना कोई तुम्हें जज नहीं करेगा कि हाँ तुम्हें 10 चीज़ें आती हो. ये ज़रूर होता है कि अगर तुम्हें फ्रंट एंड आता है तो डिज़ाइन आना इज़ गुड, कई बार हेल्प कर जाता है. एंड सिमिलरली अगर तुम्हें बैक एंड आता है तो डेवऑप्स आना इज़ गुड. एक चीज़ ज़रूर होती है कि मतलब आफ्टर यू गेट हायर्ड थोड़ा तुम्हें जज किया जाता है इस चीज़ पर कि यार ये बंदा बिल्कुल इससे पढ़ा ही नहीं चाहता, ये कोड बैक एंड कोड इसको समझ नहीं आता. तो इतना रख लेना कि समझ सब आ जाए. बट ऑन अ डे टू डे यू बेसिकली नीड टू ओन वन पीस तो भी गुड एट इट. मतलब ये बहुत वेग सा ही आंसर हो गया. हाई लेवल में आना सब चाहिए बट स्पेशलाइजेशन एक चीज़ में करो. एंड टू एंड उस फीचर को कैरी आउट कर पाओ वगैरह. या एग्जैक्टली. And Yeah, just no problem. Yeah, Kiran. just one more act. मिलिंद हाँ फिनिश. या मैं भी लाइक खुद से पढ़ते 100x डॉक्स बना रहा था. हाँ. तो उसमें मैंने एआई इंटीग्रेट करने का सोचा. तो लैंगजेन के कुछ अडेप्टर्स हैं और अभी जेमिनी प्रो का एपीआई लाइक 60 रिक्वेस्ट पर मिनट लाइक पर सेकंड का शायद फ्री है. तो मैं इंटीग्रेट करने का सोच रहा था. तो इफ़ यू कुड गिव सम आइडियाज़ और अल्फाज कि कैसे एआई को इंटीग्रेट करते हैं. तो यार ये तो कर दो. मतलब तुम अडाप्टर क्या करो, मतलब तुम मार्कडाउन में लिख रहे हो ना पूरा 100x डॉक्स जो मैंने देखा था. हाँ मार्कडाउन में लिख रहा हूँ, पर सारा जो डेटा है वो मेरे पास इन हाउस है. तो उसको एज अ प्रॉम्प्ट या डेटा फीड कर रहा था जेमिनाई को. करेक्ट. और फिर एक मतलब वो डॉग से बात कर पाएंगे बच्चे. या इट्स परफेक्ट व्हाट वी नीड. ये तो कर ही दो. अगर हो सकता है तो किसी वीडियो के लिए भी देख दो. मतलब तुम 100x डॉक्स जो बना रहे हो मतलब उसको तुम हर वीडियो के लिए एक डॉक रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, हर एक टॉपिक के लिए. गॉट इट. हाँ तो द ओनली थिंग आई वुड से इज कि किसी तरीके से ऐसा कर दो कि यू नो हर वीडियो के लिए हो पाए. दैट इज़ व्हाट बेसिकली समथिंग आई एम ऑलरेडी पेइंग समवन फॉर. तो अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो तो आई कैन जस्ट पे यू कि यू नो. हाँ उसका एक प्रोजेक्ट मैंने दोस्त के साथ किया भी था. यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्शन एपीआई से सारा डेटा आ रहा था यूट्यूब का और उसके ऊपर एक चैटबॉट बना दिया. हाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तुमने ट्राई किया है ये चीज़? हाँ ट्राई किया है. ओके मुझे एक एग्जांपल तो भेजी थी. मैंने यूट्यूब जीपीटी करके प्रोजेक्ट है वो देखा था. इट वाज ओके ओनली. पर ठीक है इधर I am also building something similar to that, and another feature in that was कि कई बार ऐसा होता है कि अर्लियर भैया ने इस बारे में कौन सी वीडियो में बोला था. So it's a compilation of multiple transcripts and you can search it, query it, git exit. हाँ सीरीज ऑफ कॉल्स कर दो भाई. मतलब ये सब ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स जैसे मुझे भेज दो बना के भेज दो. मैं टेस्ट कर लूँगा. अच्छा लगा. ओपन सोर्स है भाई. मैं वो Even सिक्योरिटी वाला जो मैंने कमेंट डाला था आपके फीड लाइव फीड पे. हाँ वो ईमेल कर दो यार. मतलब यहाँ पे मत बताओ. बट देयर आर फ्यू बग्स. नहीं, बताओ. मुझे एक्चुअली क्या पूछना था आपसे. आई एम एबल टू रिलीजर की जो रिक्वेस्ट जाती है एपीआई कॉल जाता है, वो कॉल जाने के बाद बैंक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, बट आपका जो कोर्स है वो ऐड नहीं होता है. सो इसके रिगार्डिंग मैंने रेजर पे को ऑलरेडी मेल डाला है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इफ इट काउंट्स एज अ
इट्स नॉट आई मीन ये प्रॉब्लम होती तो ये बहुत लोग कंप्लेन करते हैं भाई, जिसका भी पैसा कट रहा है और उसको कोर्स का एक्सेस नहीं मिल रहा तो मेरी हालत ख़राब हो जाती. दिस प्रॉब्लम एज केस यू हिट. No. I was since आपका कोर्स का वैल्यू है 6,200 कंसीडर करो. अच्छा मैं समझ तो गया. जो कॉल जाता है तो उसका अमाउंट 6,200 जाता है. तुम तो उसको मैंने छोटा कर दे रहे हो. अमाउंट मैनिपुलेट किया, उसको 1 रुपए किया, वो बैंक का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, Correct. बट वो कोर्स ऐड नहीं हुआ. हाँ तो ये बग नहीं है, मतलब ये किसी भी वेबसाइट में तुम कर सकते हो. इवेंचुअली तुम्हें पैसा रिफंड हो जाएगा. दैट पेमेंट वोंट बी कैप्चर्ड बिकॉज जब पेमेंट कैप्चर हो रही होती है वी चेक द प्राइस एंड मेक श्योर यू नो इट इज़ वॉट यू बेसिकली. बस 7200 करना चाहिए. वो तुम कभी किसी भी वेबसाइट में कर सकते हो ये चीज़. तुम वो बस ये इफ़ द वेबसाइट हैज़ रिटन गुड कोड तुम्हें पैसा रिफंड हो जाएगा. इफ़ द वेबसाइट इज रिटन बैड कोड तो यू नो उनके पास पैसा रह जाएगा. इफ़ द वेबसाइट इज रिटन रियली बैड कोड तुम्हें फ्री में एक्सेस मिल जाएगा. दिस इज नॉट अ बग बेसिकली. Here, just a quick question. आयुष्मान. चलो आदित्य राज बोलो. Aditya, बोलो. carry on, sir. मैंने पाइथन का यूज करके एक पैकेज बना रहा बाकी पैकेज जो बेसिकली क्या करता है कि लेट्स से हम लोग जब डीप लर्निंग करते हैं तो हमें इमेजेस देखनी रहती हैं कि वो कैसी है. तो हमें अगर मैथमेटिक और पांडास वगैरह यूज करें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा. ओके. तो मैंने क्या किया कि एक लाइन में हम लोग फाइल डाल देंगे कि कौन से फोल्डर में इमेजेस है, एक और लाइन में CSV चला जाएगा कि उस फोल्डर से रिलेटेड लेबल्स इसमें है और नीचे लेबल कैसे प्रिंट करने हैं, लाइक सारे के सारे करने हैं या ये करने हैं, फिर उसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, टेक्स्ट साइज क्या होगा. और उसे मैंने गिटहब पे ओपन सोर्स करके पोस्ट कर दिया है. तो मेरे पास अभी और ज़्यादा आइडियाज नहीं आ रहे कि उसमें मैं क्या ऐड करूँ. तो अगर आप उस सोर्स कोड को या फिर आप जरा देख के अगर बता पाओ कि उसमें और क्या ऐड करना है या कैसे करना है. अब कोड डाल दो चैट में. अभी टाइम लगता है तो मैं देखता हूँ. डाल दिया अभी hexagonal.tech करके है वो. अगर आप स्क्रीन शेयर करके अगर थोड़ा देख बता पाएंगे कि. और मैंने इसका एक डॉग पेज भी बनाया है, तो ये डॉग पेज पे रिडायरेक्ट करेगा आपको. एक मिनट, कहाँ है तुमने, कहाँ डाला? चैट में मुझे दिख नहीं रहा. ये मैं फिर से डाल रहा हूँ. ये ईगल व्यू क्या है? hexagonal.tech ईगल व्यू. हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन विद ईगल व्यू क्या है ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना. लग तो काफ़ी कूल रहा है. बेसिकली कि अलग अलग फोल्डर है हमारे पास और उसमें इमेजेस है और हमारे पास एक CSV फाइल में लेबल है. तो हमें अगर उसे मैट्रिक्स व्यू में ये दिखाता है जो इजी हो हमें समझने में कि हाँ क्या कंटेन्ड है उसमें. अगर आप नीचे जाएंगे तो एक एग्जांपल भी प्रिंट किया ना. कहाँ पे? कोड में? यहीं पे? हाँ नहीं, गिटहब में कुनार में भी है बट गिटहब में क्या थोड़ा ऊपर. हाँ यहीं पे. क्या है आउटपुट एग्जैक्टली, क्या पता लग रहा है मुझे? जैसे कि एक फोल्डर में इमेजेस थे और CSV फाइल में इमेज का नाम और उसका लेबल था. गॉट इट. तो हम लोगों ने जैसे कि हम लोग जब मेन डेटा फैक्ट्री यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग फोल्डर में अलग अलग नंबर है. तो हमें अगर उसे शोकेस करना है तो पांडास भी यूज करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब भी यूज करना पड़ेगा. बट इसमें 2 लाइन मिल जाएगा. अगर आप इसका मेन वाले रेपो में जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटपुट कैसे दिएगा. गॉट इट. मैं इसको कॉल के बाद देखता हूँ. दिस इज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन बट मैं इसको बुक मार्क कर लेता हूँ. हैप्पी टू लुक एट इट लेटर ऑन. क्वेश्चन तुम्हारा यही है ना कि इसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ? हाँ, और लाइक इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं या और क्या क्या ऐड हो सकता है. तो मैं कोड कर, वैसे तुमने, मैं बेसिकली कोड करके पढ़ के बता दूंगा. वैसे तुमने खुद की, मतलब तुमने खुद की लाइब्रेरी लिखी है या तुमने कोई और लाइब्रेरी यूज़ करके उस पर रैपर लगाया है? मैटप्लॉटलिब, पांडास और पिलोन ये तीनों का सर्च में आया, बाकी पूरा लिखा है. गॉट इट. तो तुमने बस इनको, इनके कुछ फंक्शंस को इनकैप्सुलेट करके हाई लेवल फंक्शंस प्रोवाइड कर दिया है ऐसा? हाँ, लगभग 180 लाइन का ऐसा कोड दिया था. गॉट इट, मेक सेंस. कूल मैन. मैं देखता हूँ बाद में, मतलब हाँ ठीक है, थैंक्स. बट अभी भैया वाली वेबसाइट देखी थी, वहाँ पे देखी was कौन सी वाली तने? स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हाँ. जो क्लोन की थी उनकी वेबसाइट, जो अच्छी थी. वेट लिस्ट वाला. मतलब उसमें बस ये था कि उसमें कुछ अच्छी थी. हाँ, मतलब एकदम प्रोफेशनल थी. वर्किंग नहीं था क्योंकि मैंने आधे घंटे में उनको जस्ट बना के जो उनकी एक्चुअल वेबसाइट थी उससे बेटर था. मैंने ऊपर उनकी भेजी भी है, लाइक Got it. अच्छा, ये कैरेट, ये उनकी है क्या? कैरेट parrot.ai कोड पैरेट. और ये तुम्हारी है. हाँ मतलब देखो तुम्हारी उनसे तो बेहतर ही लग रही है मुझे, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. हाँ
एंड इट्स लाइक मैंने आधे घंटे में बना के उनको जल्दी जल्दी रात में 3:30 बजे देखा था, तो इट्स लाइक काफ़ी दिन हो गए थे उनकी पोस्ट को लिंक्डइन पे, तो आई थॉट लेट्स जस्ट अप्लाई सेंड देम। सही है, मेक सेंस। आई थिंक तुम बता देना उनको तुमने आधे घंटे में किया। आई थिंक दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव अगर तुमने आधे घंटे में किया तो। Kirat, this is a very precise question. Precise question. We like precise questions. Go for it. Precise question. Yeah. So, I'm a final year BTech student, tier 3 college. Have made multiple projects in backend automation. Interned at 2 companies, both with backend profiles. Got very nice work experience. Now I am graduating in June 2024. Now I am looking for some remote opportunity. What should be my right compensation expectation? Great question. What is the current comp that you can get without a remote job? In my current startup, unfortunately, they are stopping all the development projects and just going on with maintenance. So it has dropped significantly, around 9 LPA, 8-9 LPA. All right. In current startup, but want to look out for remote opportunity. So there have been a lot of inspiration in that part. All right. Thank you. I think 25K, 30K US dollars पे अगर तुम अभी 10 कमा रहे हो तो 10 से आई एम अज्यूमिंग 25 लाख की जंप इज़ अ गुड जंप फॉर यू, एंड 30K US dollars इज़ वेरी हम्बल, इज़ अ ग्रेट स्टार्ट. मतलब इट विल टेक अवे ऑल द वन अनसर्टेनिटी फ्रॉम द रिक्रूटर्स माइंड की चलो ये सिर्फ 30K ले रहा है, बाकी तुम मतलब ऊपर नीचे नेगोशिएट कर लो, बट 30K आई थिंक इज़ अ बेयर मिनिमम मेट्रिक. उससे कम अगर 30K पे कोई नहीं मांग रहा है तो 20K पे भी नहीं मानेंगे वो, फिर उनके पास पैसा ही नहीं है. Right. And startups would be the ideal choice for that. I would think so, yeah. Y Combinator, that page you suggested. Or otherwise, maybe not. And otherwise, yeah. The previous internship was also cold mailing for me. Got it. So cold emailing and all those stuff, right? Cold emailing, yeah, mailing the HR or the CTO, engineering manager. Yeah, in my previous company, I got it through cold email, so I'm quite confident with that. Yeah, cool, makes sense. Kirat, I have something very specific to address from your last video. Yeah, go for it, Vignesh. Vignesh, go for it. Okay, wait. Okay, can I think I should turn on my video. Okay, wait, I don't. Just a second. Okay, so the thing is, what happened? I think we have also talked on WhatsApp, and I don't want to address this much. We can talk there. But something happened where you mentioned some 12 projects regarding this, stuff like something. So I was looking through the video, and I saw something we had a talk regarding that, and you said that you need some time to think about it before if you want to invest in that or something. So then I saw that on your YouTube, and I'll not say that I'm what happened there, but if you remember that, or should I ping you on WhatsApp? Ping me on WhatsApp. Totally, दिमाग बिल्कुल याद नहीं रहती चीजें भाई. Okay, it's all right. Cool. यूनिस बोलो, यूनिस go for it. हाँ, हेलो किरत भाई. मैं आप जैसा कि ये वीक 4 चल रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले जूम में भी पूछा था कि वीक 4 के स्टार्ट होने तक हमें ओपन सोर्स में मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करना है ना, करेक्ट, एटलीस्ट. करेक्ट. तो मैंने ना एडॉप वाला वीडियो भी देखा जिसमें आप कोई एसिंग एपीआई से CLI वगैरह में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे. तो मैंने वो देखा, मुझे वो भी समझ नहीं आया, और मैं ट्राई किया कि cal.com पे जाके उनका एटलीस्ट कोड बेस समझने का ट्राई करूँ कि क्या है क्या नहीं है. तो मुझे वो भी बिल्कुल नहीं समझ में आया. पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि पूरा टेक स्टैक कलेक्ट कर लेने के बाद, मर्ज स्टैक पूरा कलेक्ट कर लेने के बाद एक जो फेज आता है कि स्ट्रगल टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, कि मेरे दोस्तों के साथ ये बहुत हुआ है. मेरे दोस्त मतलब उनके पास 2 years ऑफ एक्सपीरियंस था एटलीस्ट के मर्ज स्टैक का, बट उनमें से जब किसी से भी मैं पूछता था कि तो ओपन सोर्स क्यों नहीं करते, तो दे से कि इट्स वेरी टफ, और उनसे होता ही नहीं था. और वो मुझे मतलब बहुत 10x इंजीनियर मुझे मेरे टाइम पे लगते थे कि भाई इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो ये कैसे ओपन सोर्स नहीं कर पा रहे इनके पास इतना टेक स्टैक होने के बाद भी. राइट. तो ये दो चीज़ें सर. हाँ, तो पहला क्वेश्चन तो यार ये कि 4 वीक्स में तो नहीं हो पाएगा. मतलब अगर तुमने अभी 4 वीक्स में ही मर्न सीखा है तो इट्स वेरी हार्ड. cal.com तो तुम बहुत ही बड़े कोड बेस में चले गए. एसिंग एपीआई भी थोड़ा टफ है. तुम सिंपल कोड बेसिस से फिर भी स्टार्ट कर सकते हो. जैसे प्रोसेसिंग का कोड बेस थोड़ा पुराना है, उसमें सिंपल, जैसे अगर तुम प्रोसेसिंग के P5 जैसे एडिटर पर चले जाओगे, उसमें mongoose यूज़र हमने mongoose किया है बैकेंड के लिए. फ्रंट एंड के लिए भी रिएक्ट नहीं यूज़ हो रहा, कोई और ही लाइब्रेरी यूज़ हो रही है. आई थिंक बैकबोन जैसे ऐसी कोई पुरानी आर्काइक सी, तो तुम वहाँ जा सकते हो. बट अदरवाइज ऑल्सो 4 वीक्स इज लिटिल टू अर्ली टू
टू टारगेट एनी प्रोजेक्ट, स्पेशली प्रोजेक्ट लाइक cal.com. वो तो भाई लोगों के सालों के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता. एंड योर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि तुम 2 साल देखो फ्रेड 2 साल 3 साल के बाद भी हो सकता है तुम्हें ना समझ आए कोड बेस, क्योंकि तुम्हारी जो कंपनी है मे बी उसमें टाइप स्क्रिप्ट अभी यूज़ नहीं हुआ, तुम जावास्क्रिप्ट नहीं बना रहे हो, क्योंकि द फर्स्ट डेवलपर of a company basically sort of shapes the code base, and a lot of startups in India at least वो किसी ऐसे डेवलपर ने लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो जावास्क्रिप्ट में ही चल रहा है. तो ऑफ कोर्स तुम कोई प्रोजेक्ट खोलो जिसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, तुम्हें नहीं समझ आएगा. द person who has been working for 2 years in a company like cal.com can open any code base and contribute to it, but someone who's worked in like some random startup in India or some consult जहाँ पे जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा है, वो नहीं देख पाएगा. तो बस वही है कि that's why I keep saying कि keep picking the right projects to contribute, to keep check pointing your knowledge from these code bases. बाकी तुम 10 साल भी किसी कंपनी में काम कर सकते हो, अगर तुम गधा मजदूरी कर रहे हो तो तुम्हें नहीं समझ आएगा. अंकित राज, गुड फॉर इट. अंकित राज एक मिनट, अंकित से स्टार्ट करते हैं. सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था. I have similar question like that from your past cohort. बताओ. मेरा ये क्वेश्चन था भैया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने वो कोहॉर्ट लिया था, ठीक है. तो मैंने जब फर्स्ट वीडियो देखी आपकी जो SNJS के ऊपर था, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं, मैंने उस टाइम पे वीडियो बंद कर दी थी. मैंने फिर भी उस वीडियो पे स्टिक किया और मैं मतलब 3-4 बार कोशिश किया. एक बार तो मैं 7th वीक तक गया जब कोर्स लाइव चल रहा था, और फिर मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर मैं 3rd वीक तक गया, और अभी मैं 4th वीक को कंप्लीट कर चुका हूँ जो फिनिश कोहॉर्ट है. ओके. और अभी मेरे को 4th वीक तक सब कुछ समझ में आता है, रिएक्ट तक. गॉट इट. जो वीडियो में बताया जा रहा है. तो अभी मेरा जो सेकंड ईयर है वो आने वाले जून जुलाई में खत्म होने वाला है. गॉट इट. तो मेरे को अभी क्या करना चाहिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए या फिर से रिवाइज करके आगे बढ़ना चाहिए? यार 4th वीक तो नहीं, कम से कम 8th 9th वीक तक तो सब कुछ समझो, उसके बाद ही प्रोजेक्ट में घुसो. मतलब Next.js टाइपस्क्रिप्ट तक पहुंच जाओ एग्जैक्टली पहले एट द वेरी लीस्ट. हाँ. और मैं कंट्रीब्यूशन के लिए कब देख सकता हूँ? किसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए? वही 9 to 10 वीक्स एट द वेरी लीस्ट. उसके बाद भी देखो जो प्रोजेक्ट हमने किया एसिंक API वाला, एटलीस्ट CLI बिट इज समथिंग न्यू ओनली, वो हमने कोहॉर्ट में कवर ही नहीं किया, तो वो शायद हमें समझना है. पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट समझ आना चाहिए. उसमें एंड में जो मैंने चीज़ें बताई थी ना कि ये वाला इशू ऐसे होगा. और एक लास्ट क्वेश्चन भैया, अगर मैंने पास्ट वाला जो कोहॉर्ट था, प्रीवियस कोहॉर्ट, उसको लिया है, तो क्या ये जो 0 to 1 है और 1 to 100 इसमें से कोई मुझे लेना पड़ेगा क्या? 100 ले सकते हो, 0 to 1 मत लेना, उसमें कुछ समझ जाएगा. 1 to 100 में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर तुम्हारे काम की लगे तो. मेरा भी एक क्वेश्चन था. एक मिनट, मैं नाम लेता हूँ. आयुष्मान. एक मिनट, आयुष्मान. मैं एक करके नाम. हाँ भैया. मैंने आपका कोर्स लिया है और मेरा प्रीवियस भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जावा स्क्रिप्ट में, और मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन शुरू करना चाहता हूँ. अभी तक शुरू नहीं किया जर्नी. तो बिगिनर लेवल में कौन से रेपोस ऐसे हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आपका क्या एडवाइस रहेगा? यार बिगिनर तो कुछ नहीं है. देखो सब कुछ बिगिनर में ऐसा होता है कि जैसे प्रोसेसिंग की मैं बात करता हूँ, वो बिगिनर है क्योंकि उसमें जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं हो रहा. पर वो इतने कॉन्वोल्यूटेड कोड बेसिस है ना, क्योंकि 5-6 साल पुराने लिखे हुए हैं, तो इवन तो तुम्हें कोड समझ आएगा, तुम्हें वो नहीं समझ आएगा कि ये यहाँ क्यों हो रहा है. वर्सेस अगर तुमने अच्छे से एक बार सब कुछ पढ़ लिया है, मान लो टाइप स्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, उसके बाद तुम cal.com तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसका कोई छोटे से web.sh का कोड बेस खोलोगे तो मैं एंड टू एंड एकदम समझ आएगा, क्योंकि वो साफ बहुत लिखा हुआ है. तो मतलब मेरी हाई लेवल एडवाइस ये रहेगी कि पहले पूरा एक बार पढ़ लो विदाउट ओपन सोर्स, देन डाइव इनटू समवन एल्सेस प्रोजेक्ट. एक और है papermark.io, उनका भी रिसेंट प्रोजेक्ट है Next.js एंड टाइपस्क्रिप्ट. वो भी कोई चेक कर सकता है, अभी पढ़ा है रिसेंटली. तो ओके किरण भाई, मोहम्मद बोलो. एक मिनट, मोहम्मद बकीर हैदर. हाँ भाई, मैं 2.5 साल से मतलब फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा हूँ. मतलब बिल्कुल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं बस घुस गया था मतलब कंप्यूटर साइंस में, और फिर मतलब ऐसे ही कंपनी को कोल्ड ईमेल किया कि भाई मेरे को काम दे दो, मैं काम कर लूंगा. तो उनके थ्रू काम स्टार्ट किया. फिर मेरे को बहुत नीड थी तो मैंने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया. अभी 2 साल से उसमें हूँ. बट द प्रॉब्लम इज कि वो बहुत कम पे कर रहे थे, बट उस टाइम मेरे लिए इनफ था. बट एक अच्छी चीज़ है कि वो रिमोट है,
तो वो अराउंड 6 LPA पे कर रहे थे। तो मैंने फर्स्ट कंपनी में बहुत ही स्क्रैच से उनका सब कुछ बनाया था, मतलब पूरा फ्रंट एंड मैंने उनके साथ ही रिएक्ट क्वेरी, अपना नेक्स्ट.js और सब कुछ वहीं पे सीखा। बट अभी बहुत ही स्टक सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ बट रिप्लाईज बहुत कम आ रहे हैं, अप्लाई भी कर रहा हूँ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हाँ, तो फिर सोचा मान के लिए अभी कोड भी ज्वाइन किया, बट स्टिल मतलब काफी स्टक सा फील कर रहा हूँ, तो मतलब करियर में भी तो क्या करना चाहिए। हाँ, तो द गुड थिंग यू हैव लाइक अ बैकअप, तो वो छोड़ना मत जरूर कि कुछ बड़ा मिल जाएगा। और बाकी एडवाइस सेम ही है जो सबके लिए भाई, मतलब get really good at it, and then once you know you are really good at it, then go into job finding mode कि हाँ approach CTOs, do things like this। पर पहले एक चीज़ को पूरी सॉर्ट कर लो, and once that thing is sorted, either go for it। फ्रंट एंड का काफी सॉर्टेड सीन मेरे को लगता है, मतलब क्योंकि मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ, काफी कुछ सीखा है मैंने, बट वही है कि फिर भी मतलब रिज्यूमे भी मेरे को लगता है कि ठीक ठाक है, बट रिप्लाईज नहीं आते हैं। मतलब मैं रिमोटली तो इंडियन कंपनीज को ही अप्लाई कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया, बट 30-40 कंपनीज को अप्लाई किया, बट फिर भी रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। मतलब एक से भी रिप्लाई नहीं आया 30-40 में से? नहीं, और मतलब अगर आता है तो फिर वही सीन रहता है, वो बोलते हैं कि करंट सिटी इतना कम है तो तुमको इतना पैसे नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकती, तो वहाँ पे स्टक हो जाता हूँ, या फिर वो बहुत जल्दी ज्वाइन करने को बोलते हैं। करेक्ट सर, बहुत जल्दी तो हमें देखना पड़ेगा कि बीच में मतलब दोनों जगह काम करो, बोल दो कि एक जगह रिजाइग्नेशन डाल दो और बीच में दोनों जगह काम करो, ये तो मतलब बेरे मिनिमम तुम कर ही लो। और टाइम बहुत कम बचा अपने पास, बाय द वे 2 मिनट्स। दूसरी चीज़ ये है कि अपना CTC मत बताओ, गलत बताओ, मतलब देखो आप गलत मत बताओ, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन इसमें अब पता नहीं है, बड़ी इंडियन मानते नहीं, पहले पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं जनरली जब रिप्लाई का। तो भाई अब तुम अगर 6 LPA पे हो और तुम्हें 9 में अगर नहीं ज्वाइन करना तो तुम 20 बताओ, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देयर इज़ नो अदर वे। और उन्होंने पे स्लिप्स मांग ली तो तुम फंस जाओगे, बट दैट इज द ओनली सोल्यूशन। मतलब ये इसमें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो कि हाँ, अगर तुमने 2 बार ट्राई कर लिया, 2 बार 6 बोला, उन्होंने बोला हम 6 के एक बल। बार ट्राई तो करो गलत बोल के, हाँ क्या वही, पता किस्मत। एग्जैक्टली, मतलब बोल दो ना फिर गलत। ठीक है भाई लोग, अब बचे हैं एक मिनट। भैया एक क्वेश्चन था हमारा। आयुष, एक क्वेश्चन ले लीजिए हमारा। एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लीजिए हमारा जो बोला था, एक क्वेश्चन ले लीजिए हमारा। हाँ सर, भैया हमने बोला था। बोलो बोलो। कह रहे हैं कि जैसे हम अभी लाइक नो कोड में हैं, ठीक है, और आपके कोड ज्वाइन करने से पहले हम नो कोड में ही थे, कि वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, इन सबसे लाइक वेबसाइट बनाते थे। उसमें हमारा पे था लाइक 20 to 30,000, ठीक है। लेकिन वहाँ जो क्लाइंट आते थे मेरी एजेंसी को, वो लाइक देते थे 2 से 3 लाख रुपए। अगर अब मैं लाइक इसमें जाऊं कि मर्ज स्टैक में ही जाऊं, लेकिन अब मेरा ऐसा है कि अगर मैं नो कोड में ही गया तो उसमें लाइक मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे पता है। लेकिन वही है कि मर्ज स्टैक में वो सिक्योरिटी है थोड़ा, और बीटेक में तो मर्ज स्टैक करना रहता है। गॉट इट। तो देखो नो कोड जाए एक कि ना जाए, एक मिनट से उसमें कम बचा है, confusion मैं बता देता हूँ। पैसा तुम्हारा बनना होगा नो कोड में ही बन जाएगा, पैसा तुम्हारा नहीं बनना होगा तो हो सकता है तुम्हारा मन में 20 से 30 हज़ार की नौकरी लगे। तो इतना मत फोमो में वो हो कि हाँ बीटेक है तो मन होनी चाहिए। नो, सर आप फिर से एक बार ले लीजिए जूम, सर जूम फिर से कंटिन्यू कर लें। चलो ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ एक और यार, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, एक और मेरा भेजता हूँ। प्रीमियम है, मैं दे दूं, मैं एक और हाँ लिंक डाल दो तुम जिसका भी है प्रीमियम। गाइस ये चलो मैं ही बना रहा हूँ, रुको मैं बना रहा हूँ, भेजता हूँ मीटिंग, एक सेकंड। इसको बंद करो, जूम। आ जाओ भाई लोग। पूछ लो भाई, अब अभी जनता कम है, किसी को पूछना है तो। शुभम बोलो। So basically, for a one project, what should be the ideal project structure? File structure for भैया आपकी स्क्रीन शेयर हो रही थी वहाँ। कहाँ पे? हाँ मतलब मुझे पता है, यूट्यूब पे ना, इट्स फाइन। मेरा क्वेश्चन था एक मिनट, मर्ज स्टैक आइडियल के लिए cal.com का कोड बेस लिख लो, अगर वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर www.ss का कोड बेस लिख मर्ज लो। स्टैक के लिए एक EDOR ERP CRM है जो मर्ज स्टैक और जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कंप्लीटली लाइक वही राउटिंग जो होती है।
कहाँ पे? हाँ मतलब मुझे पता है, इट्स फाइन। हेलो भैया। राहुल BH बोलो, राहुल बोलो, हेलो भैया। हाँ भैया, खैरियत है? एक क्वेश्चन था। राहुल बोलो, हाँ म्यूट कर लो अपना यूट्यूब म्यूट कर लो। मेरा क्वेश्चन है, हेलो हाँ बोलो, हेलो भैया भैया। मेरा क्वेश्चन था एक। राहुल बोलो। सर भैया, हाँ बोल रहे थे कि एक मैंने, मिनट, सबको म्यूट कर दिया, राहुल अनम्यूट करो। हाँ भैया मैं अभी 4th ईयर में हूँ। मैंने 3 इंटर्नशिप्स करे हुए हैं, 2 वाईसी कंपनी है, एक दूसरी कंपनी, सारे रिमोट है। ठीक है, और पहले पहले पे था अराउंड 10 से स्टार्ट हुआ था, अभी 75 है। मैं सर आए ना 1000 में बात कर रहा हूँ। हाँ, अब इसके बाद मेरे पास कोई एज सच फुल टाइम ऑफर नहीं है, मेरे को थोड़ा सैस में इंटरेस्ट है। वो खुद का कुछ सैस टाइप हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो मतलब कैसे रिमोट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, क्योंकि मतलब अब तो आदत सी हो गई कि रिमोट ही, क्योंकि कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। हाँ मतलब देखो, इसका बहुत जेनिक सा आंसर है ना कि तुम्हारी 75,000 की पर मंथ की नौकरी ऑलरेडी है, पहले तो उनसे ट्राई करो कि तुम फुल टाइम में कन्वर्ट करो तो उनसे ज़्यादा पैसे लो, और अगर नहीं होता तो तुम्हें रास्ता पता ही है, जहाँ तुमने इंटर्न किया उन्हीं कंपनी, वैसी ही कंपनीज और ढूंढो और फुल टाइम ऑफर मारो और ज़्यादा पैसे मांगो। बाहर की कंपनीज में मांगने से ज़्यादा इजी, मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने जो वाईसी कंपनी से स्टार्ट करा था वो इंडिया वो का एक्चुअली में इंडियन कंपनी है, बस बाहर की, मतलब बेस्ड है बाहर, गॉट इट। है हाँ इंडियन कंपनी। मतलब देखो यार, इंडियन फाउंडर होगा तो थोड़ा तुम्हें स्क्वीज करेगा, अगर तुम इंडिया में रह रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हें वैसे ऑफर नहीं मिलेंगे अनाप शनाप, बट इंडियन फाउंडर को कन्वर्ट करना थोड़ा आसान होता है। तब वो यार प्रोज एंड कॉन्स, ऑफ कोर्स पहले एक मोटा ऑफर हाथ में रख लो, जब मिल जाए तो फिर इंटरनेशनल डॉलर वाले ऑफर को सेकंड क्रैक कर लेना, पर एक बार को तुम्हारी 75,000 एज एन इंटर्न, तो अगर 75,000 मिल रहा है तो तुम एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय 2 लाख तो मांग ही सकते हो, ज़्यादा ही मांग सकते हो, तो वहाँ से स्टार्ट करो, एंड देन इफ यू फील दैट्स लेस देन अप्रोच कंपनीज विद नॉन इंडियन फाउंडर्स। वैसे 24-30 बेस रख सकते हैं। ईजी, मतलब अगर तुम 75,000 एज एन इंटर्न ले रहे हो तो 24 बेस इज नॉट टू आउट ऑफ द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, इवन फॉर दिस कंपनी जहाँ पे तुम 75 ले रहे हो ऑलरेडी। इधर से मेरे को 20 का ऑफर है, बट इधर काफ़ी टाइम जा रहा है मेरा, तो टाइम तो जाएगा ही फुल टाइम नौकरी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मुझे चाहिए था थोड़ा सा चिल नौकरी चाहिए, तो फिर उसमें तो चिल नहीं यार, मतलब मुझे चाहिए था कि थोड़ा अगर खुद के लिए साइड में कुछ कर पाऊंगा देखो तो यार, मस्त रहेगा। मस्त तो रहेगा, बट एज एन एम्प्लॉयर 100 hours per week। तो अलग से तो वहाँ तो 40 घंटे दो अपने, और मतलब बाकी टाइम में निकालो, अगर तुम अंडरकट करोगे कंपनी को तो ऑफ कोर्स यू विल गेट कॉट एट सम पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, अब फैजल बोलो, फैजल कुरैशी। Sir, yeah, I can speak now. So, Yeah. actually, I'm from a non-technical background. I currently work for Marriott. I already have a good package. I'm working, yeah. Take over So it. I already have a good I already have a good package here, like 15 lakhs LPA in India. I want to switch to like in IT industry, and I'm actually thinking about buying your course. My initial question is that how hard would be the transition from my background to like, and how hard it would be to get a job in after completing everything. Yeah, so basically long story short, don't leave your job at front. पहले maybe before my cohort, spend some time doing basic HTML, CSS and JavaScript. If you're able to cut through that and write HTML, CSS, JavaScript code yourself, then maybe think of diving into this cohort. Maybe even buy a 500 rupee Udemy course first. Make sure you can stick through that. If you can, then maybe buy this cohort, and then usme be very HTML, CSS, I'm already, I think I understand how it works, and I already actually designed websites for myself in past with HTML, CSS. That's why I've been considering for this. Yeah. So JavaScript bhi kar, do JavaScript as well. Okay. Yeah, and Okay. then maybe buy a Udemy course of 500 rupees, stick through that, and then if you feel like you like it, you've been able to stick through it, then buy the cohort and then go from there. Okay. Venki, chat देख, yeah, Venki, go for it. To say the last thing that 1 second, Faisal. Okay, Faisal, go for it. Let Faisal complete, then I was Venki. saying that I was saying
I would like to like genuinely I actually messaged you on Discord as well about this. So I know you travel a lot and I work with Marriott. So anytime you want, like I get employee discount everywhere. So परफेक्ट. feel free to connect with me. चलो भाई, So दिस कुछ तो बढ़िया खाया था भाई मतलब. सही है थैंक यू सही सर. है भाई को भी दे दे भाई हमको तो मार्केट वेंकी गो फॉर इट. वेंकी 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 कर लो हेलो ट्राई करो भाई आने को दे दे Sorry, Venki. Let Venki speak, guys. I'm going to mute everyone. My number does. या Okay, Venki, go for it. यार किरण भाई हाय कैसे हैं? बढ़िया, आप बताओ. मैं भी ठीक हूँ. मैं सपोर्ट इंजीनियर है एक कंपनी में फिलहाल. अभी मैं स्टार में डेवलपर था एक कंपनी में. उसके बाद वो कंपनी पगार का नखरा कर रहा था तो ये कंपनी में ज्वाइन किया एजेंसी में. तभी फिलहाल सपोर्ट में ओके है बट पगार कुछ 25,000 है. ठीक है, मुझे स्विच करना है एक वापस डेवलपमेंट साइड में. पर मैं डॉटनेट में था इनिशियली, जब था डेवलपमेंट में. तो अभी फिलहाल मैंने आपको कोर्स लिया है बट अभी मैं जीसॉक भी प्रोफेशनल कर सकता हूँ ना फिलहाल. जीसॉक कर सकते हैं. तो हाँ, तो मुझे कोई प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं बार प्रोजेक्ट से और ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशियल लेवल पे रह सके. हाँ, तुम कोर्ट में हो तो मतलब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वैसे. प्रोसेसिंग से स्टार्ट कर लो. बट हाँ, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ 5-6 की, उनमें से कोई भी पिक कर लेना. ओके ओके पता नहीं था. ओके हाँ चलो, थैंक यू Alright. सो मच. आइए भैया मेरा क्वेश्चन. हर्षित, गो फॉर इट. हर्षित. एक मिनट. हर्षित की बारी है भाई, हर्षित को बोलने दो. ऑलराइट, म्यूट हो गए सब. हर्षित प्लीज अनम्यूट कर लो. Okay, भैया thank you. तो basically it's a beginner level question काफी ज़्यादा. I'm a first year student and ऐसा like जैसे first year students होते हैं सारे, I'm like doing DSA and थोड़ा बहुत web development. तो basically it's like DSA, OBD, DBOD and side by side I created a website using HTML and CSS. But मैं आपके भी videos देखता हूँ and सब कुछ सर्च कर जाता है, but I like watching it and backend वगैरह. It's like very interesting to me. तो how can I exactly start? Frontend मेरे को आता है HTML, CSS and do any DSA in all this? Sorry, what was the last statement? Do any DSA? क्या बोला DSA की जरूरत पड़ सकती है? नहीं. और देखो, DSA की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट मतलब बैकएंड स्टार्ट करने का तरीका वही है यार. बिल्ड अ प्रोजेक्ट. एक फ्री फुल स्टैक रोड मैप है मेरा यूट्यूब पे. इट्स लिटिल फास्ट एक्चुअली. तो मे बी किसी और यूट्यूबर से देख लो जो थोड़ा स्लोली पढ़ाए. एक बार सीख जाओ, फिर प्रोजेक्ट्स बनाओ. फ्रंट एंड तो मैं ऑलरेडी आता है, तो इंटीग्रेट करना शुरू करो. स्टैंडर्ड एडवाइस. And if I want to like अगर मैं किसी के लिए सिर्फ फ्रंट एंड का काम करना चाहता हूँ तो कैन आई डू इट, और इज इट लाइक बैक एंड का भी आना चाहिए मुझे साइड बाय साइड? नहीं कर तो फ्रंट स्टार्टिंग में हायर कर लेता है तो नहीं एक्सपीरियंस है. या आई थिंक इट्स आई मीन कर लो यार. मतलब देखो, इतना अगर तुम्हें फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड रिएक्ट इज मोर डिफिकल्ट देन नोड आई फील. तो अगर तुम्हें फ्रंट एंड हो गया तो तुम 1 महीने में नोड निपटा लोगे. व्हाई टू इवन लीव थिंग्स टू चांस एंड कर लो. तो मुझे उसके लिए बिजनेस का करियर करना चाहिए या कैन आई डाइव इनटू सम लाइक कोहॉर्ट वगैरह जो है आपका? पहले ट्राई करो एक बार खुद से. वही यार, मतलब स्टैंडर्ड एडवाइस रहती है कि पहले एक यूडेमी का कोर्स खरीदो 500 का. अगर तुम्हें पैसे खर्चने हैं, इफ यू थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, स्टिक थ्रू इट, देन फील फ्री टू बाय द कोड. हेलो भैया मेरा क्वेश्चन था. ऑलराइट, परिजात भट्टाचार्य, गो फॉर इट. हाँ जी. हाय भैया, मेरा एक क्वेश्चन था कि समझ लीजिए आप पोर्ट 2 के स्टूडेंट हैं. हाँ, तो आप अब तक जितना हुआ है लाइक नोड.जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी जितना हुआ है अब तक, और रिएक्ट का मतलब शुरू नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक से शुरू नहीं हुआ है. करेक्ट. तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता? अगर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता अगर आप स्टूडेंट होते तो? या ग्रेट क्वेश्चन. बिगिनर होता ना, एकदम कुछ नहीं आता, अभी यहीं से सीखना शुरू करा ऐसा. मतलब थोड़ा इंटरमीडिएट, मतलब मेरे को थोड़ा सा जावा आता था. गॉट इट. ऐसा समझिए. मेक सेंस. तो मतलब ये अगला वीक जब हो जाएगा ना, उसके बाद पेल के प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करो. उसके बाद तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है. ऑलरेडी फ्रंट एंड बैक एंड तुम्हें आता है सॉर्ट ऑफ, बट वो ये कि फ्रंट एंड अभी रिएक्ट को यूज़ करने नहीं आता. एक बार वो हो जाए तो बस प्रैक्टिस दुनिया भर की कर लेना. उसके बाद अपने प्रोजेक्ट बनाओ, जो बन रहा है वो बनाओ, 10 और प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि तुम्हारा हाथ बैठ जाए. और अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देखना है तो मॉन्स्टैक और जावास्क्रिप्ट में ही रहा लिंक मैंने अटैच कर दिया है. अरे वाह, वेरी नाइस. ओके. हाँ, तो ये भैया और एक चीज़ था पूछना. पूछो. फ्रंट एंड में इंटर्नशिप ढूंढना इजी होता है कि बैकएंड में? क्योंकि इन जनरल बैकएंड में लोग लेते नहीं. मैंने बहुत अप्लाई किया था लेकिन हुआ नहीं. हाँ, तो यार फ्रंट एंड ही होता है. देखो आज भी जैसे मैं जब भी कोड करता हूँ, मैं खुद बैक एंड कोड करता हूँ, फ्रंट एंड आगे डेलीगेट कर देता हूँ ना. फ्रंट एंड एक ऐसी चीज़ है तुम डेलीगेट कर सकते हो इंटर्न्स को. बैक एंड में तुम थोड़ी फटेगी. तो हाँ, फ्रंट एंड की एज एन इंटर्न फ्रंट एंड इज बेटर. अच्छा. और आप एक रेज्यूमे बिल्डर सेशन या कुछ रखेंगे क्या?
एक रेज्यूमे कैसे मतलब प्रॉपर्ली बनाया जाता है रख सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, मैं कभी बता भी देता आप हूँ यूट्यूब में ऑलरेडी। रख लो। मैं ट्राई कर लेता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। रेज्यूमे कौन ही देखता है, एटलीस्ट ओपन सोर्स या ये रिमोट जॉब, आई डोंट थिंक एनीवन लुक्स एट इट। हैप्पी टू डू इट, बट उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। कूल, ऑलराइट। अब भाई हाथ खड़े करने शुरू करो। एमिनेम स्टार्ट करेगा। जिनके हाथ खड़े हैं उन्हीं के देख रहे हैं, एक बार हैंड रेस कर लो। चल वायरल गुप्ता गो फॉर इट, या विरल गुप्ता, सॉरी सॉरी, एमिनेम भी आ गया अब। चलो एमिनेम तुम ही बोलो पहले। हाँ मुस्लिम शेर, Okay, Harkit, I'm audible, right? या गो फॉर इट। Yeah, a very specific question. So I'm a backend engineer working for like around 2-3 years. I work with stock exchanges and like commodity exchanges and all. Right now I'm working in an Indian company. I'm getting around 40K US year, and I was just wondering whether I should make a switch to maybe 100K, like in that range outside US remote, or should I stay here and try to get stocks out of them? इफ़ यू आर बुलिश ऑन द कंपनी, इफ यू थिंक इट विल गो, देखो यार 40K और 100K में बहुत फ़र्क है। इतने स्टॉक्स तुम्हें नहीं मिल पाएंगे कि तुम 60K का जस्टिफाई कर पाओ। अगर तुम 100K ऑफर मिला ले लो। हाँ, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यस, in terms of value, just can you suggest a number like which would be, if you're already making because it's 40K, uncertain money, right? So what's uncertain money? Oh, stocks is always uncertain, right? So yeah, in that sense I was asking. तो यार really depends on the company. अब वो if they raise during the last bull at some crazy valuation, then तो don't do it only. If they have not raised yet, No, the valuations are quite realistic right now. Realistic, okay. So if they're valued realistically, have a zero strike price and maybe just double it. तुम 40K बना रहे हो तो 40K पर एनम बोल दोगे, मेरे को 100K ऑफर मिल जाएगा, मैं वहाँ जाऊँ, उससे बेहतर है। देखो जनरल रूल ऑफ थंब है, अगर तुम्हें कहीं से 50K कैश मिल रहा है और तो यहाँ से एटलीस्ट 100K और स्टॉक्स मांगो, अदरवाइज क्योंकि स्टॉक्स आर अनसर्टन, राइट? एंड बिलीव इट और नॉट, वेरी रेयरली डू दे मेक यू वेरी रिच। So if you're getting 40K right now and someone's offering you 100K, ask them to give you at least 120K, which is like the difference into two in equity. Got it. One small side question. I was just working on matching engine for past 6-7 months. Whenever I get time, is that something worth investing my time in? And if I think of releasing that as a SaaS, or go for it. I mean, is that not something where who will buy it? Exchanges look for, like, yeah. Nah, people usually build it in house. You can build other things like trading bots, things like these, market making bots. I don't think anyone needs. Everyone builds like a market matching engine in house. What company is this? Or like if you want to give a rough name, are there companies in India? Exchanges are there? मुझे लगा 2 ही exchange India में, Zerodha and Grow. What are these companies? No, I was working for Singapore and Hong Kong. Got it. Yeah, so I was making matching engines for like commodity exchanges and all, like small exchanges, carbon credits and other stuff, like mines and all. Got it. That makes sense. Cool. Yeah. I just have one question. You're welcome. Okay, Viral. One more question. Hello. Viral, go for it. Okay, so I made a website for my client. Can you tell me how much can I charge for it? I have posted the link on the chat. तूने बना दिया वेबसाइट ऑलरेडी? हाँ, I just want to show you the demo. Tech Trust India. So basically, I have implemented 3JS and stuff. Oh, nice. They had models. Got it. हाँ, तूने बना ही दिया बेसिकली। वही यार, कितने घंटे लगे तुम्हें रियलिस्टिकली बनाने में? रियलिस्टिकली भाई सारा मिला के भाई 20 घंटे। हाँ, तो 20 into 20 तो बनता ही है। $400 तो मांग ही लो थोड़ा, 300 से 600 डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी जो इच्छा है। बाकी देखो भाई, प्राइस ऑफ समथिंग इज़ व्हाट समवन इज़ विलिंग टू पे फॉर इट। अगर तुम्हें लगता है 1000 दे देंगे तो 1000 मांग लो, बट रियलिस्टिकली तुम्हें 20 घंटे लगे, तुम उसको स्केल कर दो 30 पे, प्राइस ले आओ 20, तो $600 $500 तो मांग ही लो। भाई उनको लाइक पता कैसे चलेगा कि 20 घंटे लगे? मेरे इतने में तो अब पता कैसे चलेगा? तो पता नहीं, मतलब पता तो कैसे ही चलता है, अनलेस यू गिव सम अनरियलिस्टिक नंबर, लोग मान ही जाते हैं। मतलब तो 20 का तुम 25 भी कर दोगे, कुछ कहेगा नहीं। अब तुम 50 बोल दोगे और मतलब देखो, मुझे देख के लगता है ये हाँ मतलब कि हाँ 15-20 घंटे, मतलब 20 थोड़े ज़्यादा है, तो काफ़ी सिंपल सा ही वैसे पेज है। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, रुक जाओ सोचने दो मुझे। मेरे पास कोई आता है ये बोल के, तो मैं लाइक इसमें मैंने वो भी बनाया, डैशबोर्ड बनाया जिससे वो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, कोई डैशबोर्ड, ओके। हाँ मतलब ठीक है यार, मतलब 20 घंटे तो लग ही जाएंगे इसमें। अब तुम आवरली देखो तुम्हें क्या लगाना है। 20 घंटे इज़ रीजनेबल। मुझे कोई बोलेगा 20 घंटे लगे इसमें, बोलूँगा हाँ ठीक है भाई, मेक सेंस।
I have a question. Hello. कोई लग गया Hello. Udhav, go for it. हेलो भाई. तो अनुज तुम ही बोलो यार, अनुज सिंह. Yeah, can I ask something? तुम पूछ लो यार. यार भैया मैं पूछ लूं. कैरी लाइफ पूछ रहा है. मैं चलो पूछ हाँ पूछो. पूछो. हाँ एक्चुअली मैं एज ए SD2 भाई कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है. SD2 काम कर रहा हूँ. हाँ और उसमें समथिंग अराउंड मेरा पैकेज बन गया है 20 LPA के आसपास. इंडियन कंपनी है फ्रेशवर्क्स. और मुझे रिमोट जॉब चाहिए था और मैं इसलिए मैंने कोहोर्ट ज्वाइन किया. और बेसिकली वहाँ पर मैं बैकएंड में ही काम करता था. फ्रंट एंड में मेरा जीरो नॉलेज है. तो अभी जैसे रिसेंटली एक ऐड का रिजल्ट आया देन आई क्लियर्ड. तो मुझे 2-3 कॉलेजेस है जिसमें हो जाएगा. मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड से मैंने शिफ्ट किया था सॉफ्टवेयर में. तो अभी कौन सा वे जाना चाहिए? MBA जाना चाहिए कि मेरे को ये ROI कैसे रहेगा? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा. वेरी हार्ड क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर. MBA हो सकता है तुम्हारा MBA बन जाए, हो सकता है यहाँ बन जाए. मतलब मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा. ये तो चॉइस मतलब तुम्हें लेना पड़ेगा. मैं तुम्हारी जगह होता तो ये देखता. अगर मेरे को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद को देख सकता हूँ 10 साल करते हुए, तो मैं रुकता. अगर नहीं तो फिर MBA कर लो, मतलब अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो. हेलो. उत्कर्ष नागपुरे, गो फॉर इट. मेरे को ये पूछना था, एज अ टेक इन्फ्लुएंसर आपको हाउ डू यू डील विद टेक फोमो? लाइक देयर इज ऑलरेडी अ वॉर गोइंग ऑन विद गो एंड रस्ट एंड मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज कम इन शॉर्ट एज मतलब बहुत तेज से आते जा रहे हैं. सो हाउ डू यू डील विद दैट? डजंट अफेक्ट मी टू मच मैन. ये तो तुमने पहले यार पूछा मुझे. आई कुडंट केयर लेस. उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तुरंत. जयेश पवर, सॉरी जयेंद्रा पवर. एक सर मुझे ले लो. चलो ठीक है भाई, तुम्हें ले लेते हैं. आ जाओ तुम. अब बोलो क्या हर गया? हेलो भाई. द क्वेश्चन इज कि मैं रिसेंटली लास्ट जुलाई से कोडिंग स्टार्ट किया हूँ. बट द थिंग इज कि आफ्टर 2 महीने ट्यूटोरियल देख के कोडिंग करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो मैंने फिर से रिवाइज करना चालू किया. मैं अभी React.js सीख रहा हूँ. तो अभी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मुझे DSA भी कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद Node.js भी. तो आपके तरफ से क्या सजेशन रहेगा कि मैं क्या क्या कंप्लीट करूँ क्या नहीं, और उसके बाद जॉब्स कैसे ढूंढूं? ये थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो. अच्छा इनिशियली ये रहेगा कि बस एक चीज़ में डिप चला जाओ यार. मतलब वही है कि तुम 10 चीज़ें थोड़ी कर सकते हो, पर वही होगा इंटरव्यू में फिर से फंबल करोगे. तो अभी के लिए एक चीज़ पकड़ो, उसमें डिप चल जाओ. वो नोट भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं. और जॉब तो भाई वही है, मतलब 10 चीज़ें ऑन है जॉब में. तुम पहले अपनी स्किल्स को ऊपर करो और खुद प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करो. जॉब की बात उसके बाद करेंगे. लाइक मैं भी React.js सीख रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि पहले React.js पूरा कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद क्या मैं DSA स्विच कर सकता हूँ या Node.js पे स्विच करूँ? DSA मत करो. फिर अगर तुम इस बात या तो DSA करो और फिर फैंग वाले रास्ते जाओ, या फिर इस वाले रास्ते जाओ और फिर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों करो. अच्छा तो फिर एक मिनट. हरदेव सिंह. मेरा कैसा? हरदेव गो फॉर इट. हेलो. मेरे को भी ले लो. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल भाई. सर प्लीज. हाँ जी ਵੀਰੇ. ਮੈਂ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਫੁੱਲ ਸਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਰਾਵੈਲ ਤੇ PHP ਦਾ. ਸੋ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 LPA ਆ. 2 LPA ਅੱਗੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ. ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈ? ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚ. गॉट इट. आही अभी 2 LPA तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बिलो स्टैंडर्ड से. इट्स लाइक 18,000 रुपीज़ अ मंथ. ते रिमोट है या फिर ऑन साइट? ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ. गॉट इट. ते टेक स्टैक ही है? टेक स्टैक ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਰਿਐਕਟ ਲਾਰਾਵੈਲ करेक्ट. हाँ मतलब यार 2 LPA इज अ लिटिल, मतलब मैं इसमें क्या है बोलूँ, इट्स बेसिकली नंबर दैट यू कैन बेसिकली लीव राइट नाउ. इसको तो छोड़ के ही स्टार्ट करो. आई थिंक बेयर मिनिमम इफ यू स्टार्ट एनीवेयर एटलीस्ट 5 LPA तो बेयर मिनिमम ही रहता है, स्पेशली इफ दिस वाज ऑन साइट एट सम पॉइंट. तो हाई लेवल ही रहेगा कि मतलब मेक श्योर यू जस्ट, आई मीन यू प्रॉब्ली नो कोडिंग वेल. अगर तुम 2 LPA भी तुम्हें कोई दे रहा है एंड यू नो वर्ड्स लाइक लारावेल एंड रिएक्ट, देन द क्वेश्चन रियली इज के स्टार्ट कहाँ से
करें बाहर, मतलब उस सर्कल से बाहर निकलो सबसे पहले। मतलब इफ़ यूर इन अगर सिटी कंपनी इन लुधियाना जहाँ पे तुम करो तो मे बी तुम यूर बेसिकली इन द रॉन्ग सर्कल। एंड एट द वेरी लीस्ट बैंगलोर में अगर तुम्हें ऑन साइड मिल रही है कुछ 6-7 LPA वही ले लो वर्सेज दिस साउंड्स अ लिटिल टू इंसल्टिंग एट अ पॉइंट। आई मीन 2 LPA फॉर एन इंजीनियर। दैट सेड जस्ट मेक श्योर तुम्हें आती हैं वो चीज़ें, ऐसा ना हो कि you're not, I mean Laravel and React is good enough. I mean I think anyone who knows these two shouldn't be charging 2 LPA. ਰਿਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਾਰਾਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ, ਤੇ ਡੈਵਲਪਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ AWS ਤੇ Heroku ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਈ ਹਾਂਜੀ at the very least कंपनी छाड़ दो ही, unless it's a lot of money for you. I think 2 LPA ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, unless you can with this company continue to work. Yeah, it's just, sorry, this is the first time I'm listening to a package like I don't know man, if it's not too much money for you, leave it. And I'm almost 100% sure कि ये इससे तो बेहतर नहीं, मतलब मत ही करो ना नौकरी। and at the very least I think 3, 4, 5 LPA if you know React for the last 2 years is like bare minimum for you to ask। ये तो ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਸੇਮ ਹੀ DSA ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ DSA कोई पूछता भी नहीं फ्रैंकली रिमोट च, बट आई मीन 2 LPA मांगना भी मत अगर तुम रिमोट जॉब मांग रहे हो। एट द वेरी लीस्ट पिच सम $10,000 which is 8 LPA एंड हाँ वहाँ से स्टार्ट करो and then go from there। इतने में if a company is not willing to pay you $10K US a year, then they're not going to hire you for any number। 10K को bare minimum रखो, as an intern start करो maybe in a remote job and then go from there। Okay, ठीक है, धन्यवाद। I have a question. Okay, let's do the last one guys। I think it's very late, need to call it here। हाँ भैया मैं पूछ लो वाले पूछ लो, पूछो जो Okay guys, I think let me just pick one and then let's call it a night here। Can I ask one question? Yes, go for it Ayush। सर एक्चुअली मैं इंटर्न कर रहा था ये एक मिनट आयुष को पूछने दो, आयुष अग्रवाल, गो फॉर इट। So sir, currently I am a 4th year BTech student from IIT Roorkee। एंड सर एक्चुअली ऐसा है मेरा सीन कि मैंने इस ईयर के स्टार्ट में अच्छे से DSA स्टार्ट किया था फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, बट अभी मतलब आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू सिक्योर अ गुड प्लेसमेंट टिल डे 2 or 3, बट अभी क्या हुआ कि प्लेसमेंट सीजन काफी खराब हुआ। इवन आफ्टर गिविंग 5 इंटरव्यूज मतलब प्लेसमेंट तो नहीं लगा मेरा अभी। सो आई वाज इवन क्वाइट डिप्रेस्ड सिंस लास्ट 20 days। सो अभी आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब जैसे, और मतलब ऐसा भी है कि जैसे कुछ कंपनीज आई 8-9 LPA वो मैंने भरी नहीं, बट अभी लगा भी नहीं प्लेसमेंट, क्योंकि मेरी अच्छी खासी शॉर्टलिस्ट थी 35 LPA वाली कंपनीज में और मैं फाइनल राउंड तक भी गया, बट स्टिल। गॉट इट। तुम्हारी ब्रांच क्या है यार? केमिकल इंजीनियरिंग। गॉट इट। इस बार कितनी कंपनी आई हैं आईटी में? सॉरी मैं पहले खुद सवाल पूछूंगा, जवाब दूंगा। कंपनीज तो 200-250 आई, बट कितनी सारी कंपनीज बिलो 10 LPA ही आई, अराउंड 100-150 कंपनीज ऐसे ही गए। गॉट इट। बट स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट गोल्डमैन ये सब सारी आई हैं? गोल्डमैन नहीं आई, माइक्रोसॉफ्ट गूगल आई मोस्टली। गॉट इट, मेक सेंस। ठीक है, तो मतलब देखो अब पूरा तुम्हारा सीजन निकल गया तो उसके बाद तो इससे ज़्यादा वाली नौकरियाँ नहीं आएंगी सेकंड फेज़ में, कम की आएंगी, मतलब अंडर 10 LPA आएंगी I'm assuming। तो मतलब वो तो ऑफर ले ही लो। इवन मतलब अभी CSE में भी मतलब मेरा एक फ्रेंड है उसका 9.5 CGPA, वो भी प्लेस नहीं हुआ। अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा खराब हालत है, मतलब CSE वाले भी रो रहे थे डे 3 पे क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग। अब टाइम्स आर चेंजिंग। और 6 LPA पे गया मेरा एक दोस्त CSE में। मतलब ये तो खैर मेरे टाइम पे भी होता था, इवन इन माय बैच देयर वर फ्यू पीपल हु वेंट ऑन 6 LPAs। बट कितने लोग प्लेस हो गए अभी तक? अराउंड 700। ठीक है, मतलब प्लेसमेंट इज नॉट बैड इन IIT, मतलब 700 इज गुड। और टोटल बैच साइज कितना है तुम्हारा? 1000? अराउंड 1200। गॉट इट। हाँ ठीक है भाई, फिर तो मतलब अब तुम कैंपस की नौकरी तो उठा ही लो क्योंकि तुम्हें मिला है ये सब। मतलब वट एवर यूर बीइंग गिवन अ प्लेसमेंट ऑन अ पोटेंशियल, तो अगले सीजन में उठा लेना और बाकी वही हाथ पैर मार के बाहर निकलो। मतलब ठीक है, यूर स्टिल इन अ मच बेटर पोजीशन देन एवरीवन एल्स हियर आई थिंक, कंसिडरिंग कैंपस में कंपनी आ रही है। एंड 700 आउट ऑफ 1200 इज मीन्स के एटलीस्ट मोस्ट पीपल और 70% ऑफ द पीपल गॉट पिक्ड।
तो मैं ये कहूँगा कि हाँ मतलब अब थोड़ा एक कैंपस प्लेसमेंट उठा लो, उसके बाद थोड़ा हाथ पैर मारो बाहर बाकियों की तरह। एटलीस्ट तुम्हें वो कैंपस प्लेसमेंट अभी मिल जाएगी, चाहे कितने की भी मिले, कम की मिले शायद। ऑलराइट, The last question एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ले लो। गाइस लेट्स कॉल इट। चलो भैया मेरे क्लास यूसुफ एक मिनट, देखो यार तुम बुरा मत मानो यार, बिल्कुल मैंने नहीं जवाब दिया, तो जवाब सबके जेनरिक ही है, प्लीज वाला बंदा पूछ लो वैसे। हेलो एक हाय हमारा रिप्लाई कर। ओके, जिनका हो गया वो मत पूछो यार। यूज हाँ हेलो जिसने बोला होगा। ओके, रिपुदमन सिंह, रिपुदमन सिंह। थैंक्स सर की काफी टाइम से ट्राई कर रहा था। थैंक यू। गो फॉर इट। या श्योर। सो एक्चुअली मेरे को बैकएंड के लिए कंपनी ने लिया था, बैंक है एक, तो उन्होंने उसके बाद इंटरनल कुछ पूछा मेरे से, एंड मॉड्यूल फेडरेशन मेरे को आती थी मिनी एप्स वगैरह के लिए। ओके, रिएक्ट में ओके, मॉड्यूल फेडरेशन माइक्रो फ्रंट एंड्स टाइप। ओके, तो उसने उन्होंने मेरे को उसमें फेंक दिया, एंड ग्राफ क्यूएल इंटीग्रेशन टाइप में। गॉट इट। तो 6 मंथ से उसी में काम कर रहा हूँ। 2023 पास आउट हूँ। सो ये काफ़ी नीश है, तो मतलब इसके लिए रिमोट में ट्राई कर सकते हैं, या मेरे को बैकएंड पे वापसी चले जाना चाहिए बोल के। ये तो काफ़ी नीचे यार, मतलब हाँ मतलब ये तो हाँ बैक मतलब हाँ ये बहुत नीचे है। बैकएंड में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, या यू नो नॉर्मल सिंपल रिएक्ट कर लो, बट हाँ दिस इज़ वेरी नीश फॉर यू टू यू नो इवन पिच के मैंने ये किया एक साल। ग्राफ क्यूएल तो काफ़ी बहुत कम जगह यूज़ होता है, एंड यू नो मेरे को उसी में डाल रहे हैं, तो ग्राफ क्यूएल फिर भी यूज़ हो जाता है मतलब, बट माइक्रो फ्रंट एंड जैसी तुम कह रहे हो, हाँ मतलब या तो मेरे को ट्राई करना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ और चीज़ें ट्राई करो बैकएंड रिमोट में जाने के लिए। या इफ़ यू वांट अनदर रिमोट जॉब डेफिनेटली जितनी चीज़ें कवर कर सकते हो करो ये, और ये सब तो बहुत ही नीचे है, इसको तो इससे थोड़ा हाँ ठीक है तो वर्क। राइट, और एक और बात थी, एक इंटरनल ग्रुप में आपके अगर ऐड हो जाता मैं तो 100x टैब में कुछ हेल्प कर पाता। रुकी को पिंग कर लो डिस्कॉर्ड से, वो तुम्हें करा देगा ऐड। ऑलराइट गाइस लेट्स कॉल इट हियर। अब मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, सॉरी गाइस, मैं अपोलोजाइज ही कर सकता हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, बट आई विल हैव टू कॉल इट लास्ट और फर्स्ट वन। हाथ जोड़ के माफ़ी भाई जो मिस हो गए, अपन करते रहेंगे, वी विल डू अनदर वन सून, उसमें आ जाना, एंड एंड तक इसी टाइम तक हो जाता है, तो यू नो यू गाइस कैन स्टिल ट्राई टू कैच मी। गुड नाइट। ऑलराइट चलो, हैव अ गुड नाइट गाइस। ऑलराइट बाय गाइस। ऑलराइट यूट्यूब वालों को भी सत श्री अकाल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।